they were on the toes for my presentation. Oh yes, for sure. That's really awesome. Super. Wonderful. Right. So very warm welcome to everyone. Namaste everyone, to all panelists, to all attendees who has joined us before time. We are still 5 minutes to the summit. And let me just share a bit about myself. This is Siddharth Dangi. I'm the founder of Mentogram, and I'm going to your host for the day, right? For the next 3 hours, I'm going to be your host, right? So we'll start sharply at 11 a.m. Right. So there are a few more minutes. So we're waiting for a few more participants to kind of join in for the session, right? Before I think we start the session, Mahendraji, I was thinking that Recording in progress. Manoj, I was thinking that how about we kind of thoda sa introduction round ho jaye? Okay. Maybe a bit of introduction session from our attendees so that we can kind of come to know who our attendees are, right? What are they based? So let me do Session this from our attendees so that we can create kind of uh, okay. So let me just open the chat for everyone to come to know chat hai. Who our attendees are, right? So Aman, is the chat open? Is it open for everyone? Yes, it is open for everyone. Right? Awesome. So very warm welcome, guys, to our 10x Mentor Summit. So the next 3 hours are going to be uh, full of insights, full of knowledge sharing, full of implementation that we will be doing to make you a 10x mentor. Right? It depends. If you are a mentor already, we can see how we can make you 10x. If you are not a mentor, then it can be the entry point for you to start mentoring, to start coaching, to start teaching, basically impacting the world with your knowledge, right? So we have a few more minutes before we start our show. So how about we kind of introduce ourselves, each other in the chat, right? So what I would request all attendees to do is help us answer 3 questions, right, in the Zoom chat, and help us answer 3 questions. Number one, your name. Number two, where are you dialing from? Basically, which city from you're dialing from? And number three, maybe a 1 or 2 word description of what you do. Are you a coach? Are you like, what are you? Are you an expert? Are you an influencer? Are you running an academy, or just a beginner? Right. So this three we would like to see who is dialing in today. So so I can see Ritesh Bhatia. Ritesh Bhatia is from Bangalore. He's a life coach. Namaste, Ritesh ji. We have Sudarshan ji joining us. He's from Mumbai and is a communication and marketing consultant. We have Pankaj Kothari ji joining us today. We have Amir sir today with us. He's from Mumbai and he is a mass media teacher. We have Aditya joining us. Aditya is a LinkedIn influencer and he's the founder and CEO of No Asia. I could see someone dialing in from the UAE. We have Dimple Kapoor dialing in from New Delhi, and she's the founder of a clothing brand. Oh wow! Welcome, ma'am, to the show. We have Johnny today with us. So Johnny, it's difficult to read this in the Zoom chat. So we have Johnny joining us from Bangalore as well, and he's a ICF certified PCC coach, C-suite coach. Awesome. Pankaj Kothari says that he is a professional working in industry. Leslie is here. Hello, Leslie. How are you? Good to have you, man, back. So he's from Bangalore, and he is joining us as a part of the recruitment training academy that is running. We have Praveen sir joining us. Praveen ji is from Bangalore, and he's the CTO and is a technology expert in AI, AR, blockchain. Beautiful. We have Sudhir Mohar ji from Nagpur joining us today. We have Abhijit from Mumbai. Rajshri ma'am is joining us for today from as a trainer, coach, and mentor from Bangalore. So I could sense that there are 2 hubs that have been created. One is Bangalore, or dusra hamara Amchi Mumbai. So I think it's pretty interesting to see that they are the epicenters for our
our show. Okay, Asya ma'am is here as well. Welcome back, Asya ma'am, to our event. We have Naveen ji. He's a leader in exports. Wow, amazing, right? So we have a kind of a wide pool of people joining us today. Some of you are coaches already, some of you are experts, some of you are founders of companies, right? So it's a diverse pool of people joining us today. And once again, a very warm welcome to each one of you to our 10x Mentor Summit. Right, I'm Siddharth Dangi. I'm the founder of Mentogram, and Mentogram is very pleased to welcome each and every one of you. Right. So I think we are good to kickstart our event. It's 11 a.m. sharp. So, team, Mentogram team, are we all good to start the event? Let's start. Let's start, right? You can see my screen. It's visible. Yeah. Yes. Awesome. Right. So once again, a very warm welcome, guys. This is Siddharth Dangi, and this is going to be a 3 hours like a session, power packed with knowledge, power packed with experience, power packed with strategies, right? And I'm very sure that at the end of the session, you will walk away with something that will help you become a 10x mentor, right? We are very sure about that. So once again, a very warm welcome to everyone. So I am Siddharth Dangi. I'm going to be the host for this event for today. I'm the founder of this company called Mentogram.com. And as the name suggests, Mentogram, we celebrate mentorship at Mentogram. We want to empower mentors. We want to empower people who has the expertise, who has the vision, who has the knowledge to share it to the world, right? So before we begin the event, let me just share about a bit of background story that why we are organizing this event in the first place, right? I think वो जानना बहुत जरूरी है कि हम ये event organize क्यों कर रहे हैं भाई. ये event Mentogram organize कर रहा है और हमारा जैसे vision है to empower 1 lakh mentors, coaches, experts around the country and make it very easy, very affordable for them to take your expertise, to take your skills, to take your knowledge, your experience to the digital world, right? So that each person, दुनिया में कोने कोने में आपका knowledge, आपका experience, you can share. So that is the vision that we are bringing. And we observed two different, like how Mentogram started. We started with two fundamental observations because of the pandemic, right? We observed that lots and lots of people wanted to, kind of diversify their income streams, right? They were kind of, उनको पता लग गया था कि भाई एक income stream से कुछ नहीं होगा. They have to kind of diversify that. So lots of people, started doing mentoring, coaching, creating online courses, right? So we saw that as an opportunity. We saw that there is a bit of gap there because all these mentors, all these, experts, you are very good in what you do. But when it comes to digital world, when it comes to digital marketing, this is something that is not your core competency. So Mentogram tries to fill in that gap. And this event is one such attempt to fill in the gap for you. We realized that there are only two things for you to become a 10x mentor. One is having an online presence, right? Having a strong tech backbone. And number two is to get guidance and strategic advice from the digital experts, from the marketing experts, right? So these are the only two things that you need to become a 10x mentor. And you will observe that in this event itself, in the next 3 hours, right, we are going to help you become a 10x mentor. We have a, we have a very beautiful panelist, speaker boards today. We are having 6 different speakers. All of them are very, very, recognized and very renowned in their own fields. They are experts in their own fields. Mentogram, I personally have interacted with each one of them, right, to ensure that, all of them can provide that value to you guys, and we have kind of invited them to this session, right? So let's kickstart our event, right? So a few ground rules to start with, right? In the meeting, please find a quiet place to participate in the meeting. Okay? Enter the if there are any technical issues, you can reach out to my team. My team is basically the list of co-hosts in the meeting. So you can reach out to any one of them if you're facing any technical issue, any kind of doubts you have.
right? Please keep a notebook and handbook ready, notebook on hand ready, right? There is lots of insights, lots of strategies that our speakers are going to share with you. Their experience of years and years of experience are going to share with you. So please keep a notebook ready. उसके बाद like do not multitask. वो बोलते हैं ना कि where focus goes, energy flows, right? So make sure that आपका energy, आपका focus इस event पे है. And हमारे पास in the event you can see a Q&A tab. If during any of the sessions, during any part of the meeting, if you have any questions, so please do ask us in the Q&A tab of Zoom. This entire summit is beautifully designed so that, because we got requests from people, Siddharth, Hindi mein karo, English mein karo. So what we decided is to make this summit a bilingual summit, right? Hindi English mix summit, so that everyone could understand that. So some of the speakers will be talking with you in Hindi, our national language. Some of them will be talking in English, right? So this is going to be a summit for pan India, right? ताकि इंडिया में हम कोने कोने से मेंटर को एम्पावर कर सके. दैट इज काइंड ऑफ आवर विजन दैट वी हैव. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, आई थिंक इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस द वेरी फर्स्ट स्पीकर, Mahendra Devlekar. Mahendra ji, all good? Shall we start? Yes. Wonderful. So Mahendra Devlekar, he is an award-winning speaker and an internationally recognized leader in personal development and peak performance strategies. In the last 15 years itself, he has trained more than 1.6 lakh people across the country. And as a beloved originator, he has taught lakhs of individuals his modernized formulas for success. And now he certifies trainer to teach his content and methodology all over the world. Right? So आज महेंद्र जी जो टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं is 10x mindset building for coaches. Now why this topic is first? Because अगर mindset ठीक नहीं है, if that is the very fundamental thing, right, for any mentor, so that's the prerequisite. उसके बाद एक बार mindset build हो गया, then आप you can become a 10x mentor very easily. So that is why we told Mahendra ji कि भाई mindset 10x mindset building पे you kind of share this session and ताकि we start on a very this note, क्योंकि mindset is everything what we have realized for mentors. अगर वो सही हो गया, trust me, 90% you are there to become a 10x mentor, right? So Mahendra ji, stage is yours. आप share screen कर पा रहे हैं क्या? Yes. Are you able to share your screen? Yes. I'll just stop sharing my screen. Yeah. Right. Okay, so great morning, all of you. Namaskar. And thank you very much, Siddharth, for this opportunity. And सबसे पहले मैं आप सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन सभी लोगों को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा, बिकॉज आज आपने अपनी जिंदगी का एक सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया हुआ है इस 10x समिट को अटेन करने का. तो एक बार अपने आप के लिए एक जोरदार क्लैप हो जाए, लेवल 10 वाले क्लैप. कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन. Thank you very much. See, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, मगर आपकी एनर्जी को फील कर पा रहा हूं. आप अपने घर पर बैठे हुए हैं और आपकी एनर्जी अगर हाई पीक पर होगी तो डेफिनेटली आप ये 10x प्रोग्राम के अंदर आप जो बैठे हुए हैं, इसमें जितने भी एक्सपर्ट यहाँ पर स्पीकर, यहाँ पर कोचेस जो बैठे हुए हैं, वो जो आपको नॉलेज देने वाले हैं, वो डेफिनेटली आप अपने अंदर उतार सकते हैं, मगर उसके लिए अपनी एनर्जी को थोड़ा सा पीक पर लाना पड़ेगा. राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज माय डियर फ्रेंड्स, जो आज का ये प्रोग्राम है, जो माइंडसेट के ऊपर मुझे जो दिया गया है, माइंडसेट फॉर सक्सेस, और जितने भी कोच यहाँ पर जो मौजूद है, सभी को है जो माइंडसेट के ऊपर मुझे जो दिया गया है, कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा, बिकॉज आप सभी लोग दुनिया के अंदर रॉक करने वाले आने वाले समय के अंदर, बिकॉज आज ये $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, ये ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री $1 बिलियन इंडस्ट्री है. सो डेफिनेटली जो शुरुआत आपने की है, आने वाले समय के अंदर आप बहुत बड़े लेवल पर जाने वाले. जो भी चीजें यहाँ पर बताने जा रहे हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज यहाँ पर देने वाले हैं, वो स्ट्रैटेजीज को अगर हमने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो डेफिनेटली वी विल रॉक. राइट? सो मैं आपके सामने स्क्रीन को शेयर करने जा रहा हूं एंड आज का जो प्रेजेंटेशन है माइंडसेट के ऊपर, मैं यहाँ पर सेशन लेने जा रहा हूं.
चलिए, क्या मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? यस, ओके, Yep. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉल्ड माइंडसेट। जैसे सिद्धार्थ जी ने कहा कि अगर माइंडसेट सही है तो सब कुछ सही है ना। हमारी लाइफ में 90% हमारी साइकोलॉजी काम करती है और 10% जो है वो हमारे एफर्ट्स, हमारे साइकोलॉजी का हमारी स्किल सेट काम करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी जर्नी को शुरुआत करने के लिए आपके माइंडसेट के ऊपर काम करना जरूरी है, बिकॉज रूट्स क्रिएट्स द फ्रूट्स। यस और नो? रूट्स क्रिएट्स द फ्रूट्स। अगर रूट ठीक है तो फ्रूट्स ऑटोमेटिकली आएंगे, अच्छे आएंगे। सो यहां पर हम बात करें दो माइंडसेट के बारे में। सबसे पहला है दैट इज कॉल्ड ग्रोथ माइंडसेट और सेकंड है दैट इज कॉल्ड फिक्स माइंडसेट। अब होता यह है कि अभी कोविड के वजह से, इस पैंडेमिक की वजह से क्या हो गया, बहुत सारे कोचेस, बहुत सारे ट्रेनर्स ने क्या किया, ये सोच में पड़ गए कि यार अभी तो क्या करें, अभी तो लॉकडाउन हो गया, प्रोग्राम ले नहीं सकते हैं, है ना, क्या करेंगे, भी रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे, इनकम कैसे आएगा। मगर जो लोग फिक्स माइंडसेट वाले थे उन्होंने अपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, ये जो सिचुएशन हुआ था उसको एडॉप्ट नहीं किया, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं किया, चेंज को एडॉप्ट नहीं किया। इस वजह से वो फिक्स माइंडसेट में रह गए और उन्होंने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ दुनिया में लोगों को देखते रह गए कि लोग क्या कर रहे हैं। मगर जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग थे, जो कोचेस थे, उन्होंने क्या किया, उसमें से रास्ते निकाले। किसी ने जूम को इस्तेमाल करना शुरू किया, किसी ने गूगल वीडियो को इस्तेमाल करना शुरू किया, है ना, किसी ने वेबिनार्स लेने शुरू किए। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो कोचेस ने अपने लाइफ में काम करना शुरू किया और आगे बढ़ना शुरू किया, क्योंकि उनका माइंडसेट ग्रोथ वाला माइंडसेट था। मगर फिक्स माइंडसेट वाले इंसान हमेशा क्या करते हैं, वो अपने एक दायरे में रहते हैं और वो सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे पॉसिबल नहीं है। वो हमेशा फिक्स माइंडसेट में ही जीते हैं। और जब फिक्स माइंडसेट में कोई भी इंसान जीता है तो अपने लाइफ में उसकी ग्रोथ होती नहीं है। मगर ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान जो है वो हमेशा चेंज के लिए तैयार होता है, बदलाव के लिए तैयार होता है और सीखने के लिए तैयार होता है। एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोग यहां पर जो बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो सभी लोग ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं। ये तो 100% मैं एग्री करता हूं, बिकॉज ऑफ अगर आप ग्रोथ माइंडसेट वाले नहीं होते तो आप यहां पर सीखने के लिए नहीं आते, यहां पर लर्निंग के लिए नहीं आते। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं या फिक्स माइंडसेट वाले हैं। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं तो चैट बॉक्स में जाइए और टाइप करें जी, टाइप करें जी। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं तो टाइप करें जी, राइट। तो मुझे पता चलेगा कि ओके, वेरी गुड। साहिल जी करें जी, ओके, शॉनी जी, अजीत जी जी, सुदर्शन जी जी, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत फास्ट आ रहे जी जी, तो मुझे पढ़ने नहीं हो रहा है कितने लोगों के। तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आई रियली अप्रिशिएट जो भी लोग यहाँ पर चैट बॉक्स में जाके टाइप कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि इस प्रोग्राम को आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिकॉज जब तक आप इस प्रोग्राम को एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब तक इस प्रोग्राम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, राइट। सो अगर हम अपने लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल कोच बनना चाहते हैं, 10x कोच बनना चाहते हैं, तो पहले तो हमारे माइंडसेट के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। उसके बाद आता है काम स्किल सेट के ऊपर। जो आने वाले ट्रेनर्स, हमारे कोचेस जो है, मेंटोर जो है, वो आपको स्किल सेट के बारे में बताने वाले। तो यहां पर हम बात करें माइंडसेट के बारे में, तो सबसे पहला जो माइंडसेट है मैं आपको यहां पर देना चाहता हूं कि बिकॉज लास्ट ऑलमोस्ट मैंने 20 ईयर्स हो चुके मुझे करियर के अंदर, और इस 20 ईयर्स के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से ज्यादा समय मैंने ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर दिया, एंड 5 ईयर्स ऑलमोस्ट मैंने सेल्स और मार्केटिंग के अंदर मैंने काम किया। और ये मेरे लाइफ का जो 20 साल का अनुभव है, और ये अनुभव से मैंने एक चीज जानी है, एंड वो है 10-90 रूल। अब ये 10-90 रूल क्या है, अब जो मैं बताने जा रहा हूं शायद आपको किताब के अंदर नहीं मिलेगा या कोई और जगह पर नहीं मिलेगा। 10-90 रूल मतलब ये है कि लाइफ जो है वो 10% प्रैक्टिकल, 10% थ्योरी है, 90% प्रैक्टिकल है। डू एग्री? कितने लोग एग्री करते से आए, राइट। सो अगर 10% थ्योरी है, 90% प्रैक्टिकल है, मगर हम अपने लाइफ में उल्टा कर देते हैं, 90% थ्योरी के ऊपर फोकस करते हैं और 10% ही प्रैक्टिकल करते हैं। थिंक अबाउट इट। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है? एजुकेशन सिस्टम के अंदर 90% थ्योरी है, 10% प्रैक्टिकल है। इसी के लिए 90% बच्चे लाइफ में फेल हो जाते हैं। 10% ही लोग सक्सेसफुल क्यों होते? क्योंकि 10% सक्सेसफुल इसी के लिए होते हैं बिकॉज वो 90% प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करते हैं, लाइफ स्किल रिलेटेड नॉलेज सीखते हैं, वो प्रैक्टिकल नॉलेज सीखते हैं। अगर आपको साइकिल सीखनी है तो 10% थ्योरी है, 90% प्रैक्टिकल है। अगर आपको 4 व्हीलर सीखना है तो भी 10% थ्योरी है, 90% प्रैक्टिकल। स्विमिंग सीखना है, 10% थ्योरी है, 90% प्रैक्टिकल है। बिजनेस करना है, 10% थ्योरी है, 90% प्रैक्टिकल है। अगर आपको एक अच्छे कोच भी बनना है, अच्छा ट्रेनर भी बनना है, तो भी 10% थ्योरी है, 90% प्रैक्टिकल ही है। हर चीज में लाइफ में देखा जाए 10-90 रूल होता है।
यानी 10% थ्योरी है, 90% प्रैक्टिकल है। तो अगर हम अपने लाइफ में सचमुच अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर हम अपनी लाइफ को लेकर जाना चाहते हैं, तो आप 90% के ऊपर फोकस करिए, प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करिए। जितना आप चीजें प्रैक्टिकल करोगे उतना ज्यादा आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं। वैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मगर मेरे पास सिर्फ 30 मिनट्स है, तो मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ये माइंडसेट को आप डेवलप कर सकते हैं। एंड सेकंड जो रूल मैंने अपनी लाइफ में जाना है, दैट इज कॉल्ड 10-20-70। 10-20-70 का रूल मतलब बहुत सिंपल है। दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं, उसमें से 10% लोग जो है, 10% पीपल आर वेरी सक्सेसफुल एंड दे आर वेरी रिच पीपल, राइट। 10% जो लोग हैं जिनके पास दुनिया का 90% वेल्थ है, 90% जो पैसा है वो ये सिर्फ 10% लोगों के पास है। मगर ये जो 10% लोग हैं ये ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, ज्यादा पढ़े हुए नहीं है ना, उनका एजुकेशन बहुत कम हुआ है या हुआ ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ 90% जो प्रैक्टिकल चीजें थी वो उन्होंने अपने जिंदगी में अपनाया, वो सीखा। इसी की वजह से वो 10% लोगों में आ गए जिनके पास 90% पैसा है। मगर समझने वाली बात यह है कि ये 20% जो लोग हैं, ये लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, उनके पास बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन है, पीएचडी किए हुए लोग हैं, एमबीए किए हुए लोग हैं, बहुत हायर एजुकेशन इनके पास है, दे आर वेरी टैलेंटेड पीपल। ये दुनिया के 20% लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। मगर प्रॉब्लम क्या है, ये जो टैलेंट है ये किसी और के लिए इस्तेमाल कर रहे, खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये दुनिया के 20% जो लोग हैं, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फॉर्च्यून 500 बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आइदर मे बी वो वाइस प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं, सीईओ का काम कर रहे हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट बड़े बड़े पोस्ट पर काम कर रहे हैं, एचआर हेड का काम कर रहे हैं। और ये जो 20% लोग हैं, ये 20% लोग, ये 10% जो लोग हैं, इनका 90% वेल्थ जो है ये संभालने का काम कर रहे हैं और बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ग्रो करने का काम कर रहे हैं और संभालने का काम कर रहे हैं। थिंक अबाउट इट। सो 10% लोग ये बहुत सक्सेसफुल है, 20% लोग थोड़ा सक्सेसफुल है, मगर ये 20% लोग, इनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, बहुत ज्यादा टैलेंट है, मगर ये टैलेंट 10% वालों के लिए यूज हो रहा है, 10% वालों के लिए यूज हो रहा है। और 70% जो लोग हैं, जो लोग ऐसे लोग हैं, जो लोग 10% वालों के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं और उनका 90% वेल्थ, पैसा जनरेट करने का काम करते हैं। याद रखिए, 10% लोग बहुत अमीर लोग हैं, 20% लोग एजुकेशन में मास्टर है, मतलब दे आर वेरी क्वालिफाइड पीपल, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। मगर ये इंटेलिजेंट 10% वालों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उनके पैसों को ग्रो करने के लिए, उनका पैसा संभालने के लिए। और 70% जो लोग हैं, ये पूरी जिंदगी अपनी ये 10% वालों के लिए काम करते हैं। मगर अगर आप कोच है, आप मेंटोर है, अगर आप ट्रेनर है, तो डेफिनेटली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके पास जो भी लोग आ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए आपके लाइफ में, जो भी लोगों से आप मिलने वाले, जिनको भी आप ट्रेन करने वाले, जिनको भी आप कोचिंग करने वाले हैं, उनको मैं चाहता हूं कि आप उनके लाइफ में प्रैक्टिकल चीजें सिखाइए, जिससे वो अपने लाइफ में खुद के दम पर आगे बढ़ सकता है और वो अपनी खुद की सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर सकता है। और वो तभी मुमकिन हो सकता है, तभी पॉसिबल हो सकता है जब भी उसके रूट पर काम करेंगे। अगर उसका रूट ठीक हो जाएगा तो सब कुछ पॉसिबल होगा। और रूट ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सो यहां पर हम जानते हैं कि हमारी एक फिजिकल दुनिया है, एक फिजिकल वर्ल्ड है। वैसे ही यहां पर मैं बात करने वाला 4 वर्ल्ड के बारे में, 4 दुनिया हमारी लाइफ में है। पहली है दैट इज कॉल्ड फिजिकल वर्ल्ड, जहां पर ये जो आप चीजें आसपास में देख रहे हैं, आपकी लाइफ में जो भी ग्रोथ देख रहे हैं, जो भी पैसा देख रहे हैं, जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें देख रहे हैं, जो भी चीजें आपकी लाइफ में है, ये सब कुछ आपके फिजिकल वर्ल्ड में है। मगर ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये रिफ्लेक्शन है आपके मेंटल वर्ल्ड का, इमोशनल वर्ल्ड का और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। अगर आप फिजिकल वर्ल्ड में बहुत अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, आउटकम अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी मेंटल वर्ल्ड को आपको अच्छा बनाना पड़ेगा। मेंटली जब तक आप स्टेबल नहीं है, मेंटली जब तक आप स्ट्रांग नहीं है, साइकोलॉजिकली अगर स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, तो फिर फिजिकल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। डू एग्री? कितने लोग एग्री करते से आए? राइट। सो अगर आपका मेंटल वर्ल्ड, अगर आपका माइंडसेट सही है, तो फिर बाहर की दुनिया में बहुत आसान होगा आपको आपके लाइफ में ग्रोथ को अचीव करना। राइट। सो मेंटल वर्ल्ड में आपको पहले काम करना पड़ेगा। सेकेंड चीज है इसको इमोशनल वर्ल्ड, आपको इमोशनली भी बैलेंस होना पड़ेगा। बहुत ज्यादा लोग इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं, और जो इंसान इमोशनली डिस्टर्ब रहता है उसके लाइफ में फिजिकल वर्ल्ड में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि उसने अपने लाइफ में इमोशनल वर्ल्ड पर काम नहीं किया हुआ है, इमोशनल लेवल पर काम नहीं किया हुआ है। सो पहली है मेंटल
वर्ल्ड, सेकंड है इमोशनल वर्ल्ड एंड थर्ड है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अब ये तीनों वर्ल्ड को हम अगर कंबाइन करेंगे तब जाके आपका फिजिकल वर्ल्ड क्रिएट होता है। तो अगर आप फिजिकल वर्ल्ड में जो बदलाव चाहते हैं वो पहले आपको मेंटल वर्ल्ड, इमोशनल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बदलाव लाना पड़ेगा, राइट? क्योंकि इनर वर्ल्ड क्रिएट योर आउटर वर्ल्ड, आपकी अंदर की दुनिया ही बाहर की दुनिया को क्रिएट कर रही है। तो अगर आप अंदर सक्सेसफुल नहीं है तो बाहर भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर 10x कोच बनना चाहते हैं तो पहले 10x कोच आपको भीतर बनना पड़ेगा, आपके अंदर बनना पड़ेगा, और जब आप अंदर बनोगे तब बाहर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और जब हम कोचिंग की बात करते हैं, ट्रेनिंग की बात करते हैं, लाइफ की बात करते हैं, तो एक कल्चर कैसे डेवलप होता है, ये कल्चर कैसे डेवलप होता है। देखिए अभी आपको मैं कुछ चीजें यहां पर बता रहा हूं, आपको मैं यहां पर कुछ चीज समझा रहा हूं। अब जो भी इंफॉर्मेशन आप तक आ रही है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट नॉलेज, इट्स नॉट अ नॉलेज, इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है। माइंडसेट के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, या बाकी जो कोचेस आएंगे वो भी आपको इंफॉर्मेशन देंगे, मगर इस इंफॉर्मेशन को अपनी लाइफ में जब आप अप्लाई करोगे, आप जब अमल करोगे, आप जब एक्शन में लेकर आओगे, आप उसको रेगुलर बेसिस पर फॉलो करोगे, तभी वो नॉलेज के अंदर कन्वर्ट होगा, तब वो नॉलेज बनेगा। अभी तक आपका इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को आप यूज करोगे तो नॉलेज बनेगा, और जब इस नॉलेज को बार 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 इस्तेमाल करोगे तब वो स्किल बनेगी। और जो स्किल आप बार 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 यूज करोगे तब वो आपकी हैबिट बन जाएगी, आपकी आदत बन जाएगी, और जो हैबिट आप बार बार इस्तेमाल करोगे वही आपका कल्चर बन जाएगा, वही आपका कल्चर बन जाएगा। तो अगर अच्छा कल्चर डेवलप करना चाहते हैं तो अच्छी इंफॉर्मेशन को अपने पास लाना बहुत जरूरी है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना जरूरी है, और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके नॉलेज में कन्वर्ट करना चाहिए, नॉलेज को कन्वर्ट करके स्किल में कन्वर्ट करना चाहिए, और स्किल को अपने हैबिट में कन्वर्ट करना चाहिए। अगर वो हैबिट अगर सही होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, आपके लाइफ में बहुत अच्छा वर्क हो सकता है, राइट? सो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, एंड दैट इज कॉल्ड माइंडसेट। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जस्ट पीपीटी, यस, ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो यहां पर हम बात कर रहे हैं बिहेवियर और बिलीफ की। अगर एक, जैसे आप ये ट्री देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, अब ये जो ट्री है, इस ट्री का जो रूट है, ये रूट जो है दिखता नहीं है, ये दिखता नहीं है मगर बहुत पावरफुल होता है। ऊपर जो ट्री दिख रही है वो क्रिएट हो रही है उसके रूट की वजह से। तो रूट है आपका माइंडसेट। अगर ये माइंडसेट अगर आपने सही तरीके से कर दिया तो डेफिनेटली आपके लाइफ में क्या होगा, 100% आपके लाइफ में ग्रोथ हो सकता है, 100% आपके लाइफ में ग्रोथ हो सकता है, राइट? सो आई थिंक सो पीपीटी इज नॉट प्रॉपर शोइंग, कैन यू जस्ट हेल्प मी? ओके, थैंक यू। हेलो, हाँ महेंद्र जी, yes, is it right slide? Yeah, full screen, please make us full screen. Full screen? Yeah. Take a second. This is Okay. full screen, right? Just give me. Okay. Okay. Got it. ठीक. Okay, done. So यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके माइंडसेट की। अगर आपका माइंडसेट अगर सही है, आपका रूट अगर सही है, तो फ्रूट तो अच्छा ही आने वाला है। अगर आपने रूट को सही कर दिया, रूट के ऊपर काम कर दिया, फ्रूट ऑटोमेटिकली अच्छा आने वाला है। तो अगर आप कोच है तो कोच के लिए आपको सबसे पहले रूट पर काम करना पड़ेगा, गो डीप, यानी डीपर लेवल पर काम करना पड़ेगा। और आपके माइंडसेट के ऊपर जितना काम करोगे उतना आपका जो आउटकम है वो बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद स्किल सेट आता है, आपका बिहेवियर आता है। मगर ज्यादातर लोग अपने लाइफ में हमेशा पहले स्किल सेट के ऊपर काम करते हैं, माइंड सेट के ऊपर काम नहीं करते। और माइंड सेट के ऊपर काम नहीं करने की वजह से क्या होता है, काफी सारे लोग टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज होता है उनके पास, बहुत सारा ज्ञान उनके पास है, बहुत सारा चीजें उनके पास है, बहुत अच्छे कंटेंट भी उनके पास है, बहुत अच्छी स्किल भी उनके पास है। मगर राइट माइंडसेट नहीं होने की वजह से वो उनको इनकैश नहीं कर पाते, पैसा नहीं कमाते उस कंटेंट की वजह से, या उस नॉलेज को पैसों में कन्वर्ट। तो अगर आप कोच बने हुए हैं, एज अ ट्रेनर के रूप में काम कर रहे हैं, एज अ मेंटोर के रूप में काम कर रहे हैं, तो आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो स्किल है, उसको पैसों में, मनी में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। और तभी जाके आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं कि कैसे अपनी लाइफ में पैसे बनाने हैं, कैसे लाइफ में क्रिएट करने पैसे, राइट? Sorry to stop you. Actually, थोड़ा स्क्रीन में क्लैरिटी इशू आ रहा है. I'll just share from my side, right? Clarity. हाँ, तो I'll share from my screen. Yes, sure. Can you see the screen? Is it
Clear? Maybe no. Can you see now? Yes, yes. Right. This slide, right? Sachin Tendulkar. Next slide. Great. Yes, Awesome. thank you very much. Yeah. Yes. Thank you. ओके सो मैं अभी आपके सामने 11 ऐसे माइंडसेट बताने जा रहा हूं सचिन तेंदुलकर जी के, जिन्होंने अपने लाइफ में ये 11 माइंडसेट की वजह से वो आज मास्टर ब्लास्टर बने हैं, क्रिकेट के भगवान बने। कितने लोग जानना चाहते हैं? से आई राइट। सो एक बार अपने लेफ्ट और राइट पार्टनर को हाई फाइव देखिए, गो यस आई एम पावरफुल, कम ऑन गिव हाई फाइव, से अपने आप के लिए जोरदार क्लैप करें, कम ऑन। राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सचिन तेंदुलकर जो है उसका उनका पहला माइंडसेट है दैट इज कॉल्ड वर्क हार्ड इन साइलेंट, लेट्स वर्क मेक नॉइज, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने लाइफ के अंदर जो आपका काम है वो काम ही रिजल्ट जो है ना वही लोगों को बताना चाहिए। आप चिल्ला चिल्ला के बताओगे कि मैं कितना पावरफुल हूं, मैं कितना अच्छा हूं, मेरा काम कितना अच्छा है, ये लोगों को बताने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपने काम के द्वारा बताना पड़ेगा कि आप कितने पावरफुल है, आप कितने अच्छे कोच है, आप कितने लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, कितने लोगों को रिजल्ट दे सकते हैं, कितने लोगों को आउटकम दे सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब आप अपने काम को बेहतर तरीके से करोगे तब। तो सचिन तेंदुलकर ने यही किया। उनके नाम पर कितने सारे लोगों ने कितनी सारी चीजें कही, कितने अपोजिट बात की और कितनी सारी चीजें की, मगर तो भी उन्होंने अपने लाइफ में कभी भी अपने काम के ऊपर फोकस किया, क्रिटिसाइज के ऊपर फोकस नहीं किया, काम के ऊपर मगर तो भी काम करते रहे और इसी के लिए आज वो क्रिकेट के भगवान बन गए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। उनका एक माइंडसेट था कि बस मुझे इंप्रूव करते रहना है, इंप्रूव करते रहना है, इंप्रूव करते रहना है। और वो जब भी कोई भी बॉल पर आउट हो जाते तो उस बॉल के ऊपर जो आउट हुए उस बॉल को ध्यान से देखते, कैसे बॉल डाला हुआ है और कैसे मैंने खेला हुआ है, तो दोबारा मुझे अगर ये सेम बॉल आएगा तो मैं कैसे खेलूंगा, कैसे मैं बाउंड्री मारूंगा, कैसे मैं उसको हिट करूंगा। वो जो माइंडसेट था, लर्निंग वाला जो माइंडसेट था, इंप्रूवमेंट वाला जो माइंडसेट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज अ कोच, एज अ मेंटर, एज अ ट्रेनर, हमें भी अपने लाइफ में हर दिन अपने आप को इंप्रूव करते रहना चाहिए। जब मैंने करियर की शुरुआत की थी स्पीकिंग की, तो मुझे बोलने नहीं आता था, मुझे हिंदी भी बोलने नहीं आता था। मैं एक छोटे से विलेज से मैं मुंबई में आया था, शहर में आया था। और जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अगर पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो मैं जिस पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करने गया था उसने भी कहा था कि तुम लाइफ में कभी भी अच्छे ट्रेनर नहीं बन सकते हो, तुम कोच नहीं बन सकते हो। मगर मैंने उसको पॉजिटिव तरीके से लिया, मैंने माइंडसेट बना दिया कि बस मुझे इंप्रूव करना, अपने आप को, अपने आप के ऊपर काम करना है। एंड उसके बाद मैंने जब भी बात करना शुरू किया, जब भी वहां पर कुछ भी स्पीच देता था, मैं रिकॉर्ड करता था और वो रिकॉर्डिंग में अपने आप को बार बार देखता था कि मैं कहां पर इंप्रूव कर सकता हूं, कहां पर और अच्छी चीजें कर सकता हूं मैं। तो जब ये इंप्रूवमेंट की बात आती है और जब हम देखते हैं और इंप्रूव करते हैं अपने आप को, तो क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हमारा काफी अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है। सो ये जो इंप्रूवमेंट वाला एरिया है, ये माइंडसेट आपको डेवलप करना है एज अ कोच, एज अ मेंटर। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है सचिन तेंदुलकर जो माइंडसेट है वो है प्रैक्टिस इज अ की टू सक्सेस। अगर आप अपने लाइफ में रेगुलर बेसिस पर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रोग्राम लेते रहोगे, चाहे लोग 1 आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, 10 जाए, डजंट मैटर माय डियर फ्रेंड्स, डजंट मैटर। अगर आप रेगुलर बेसिस पर प्रोग्राम लेते रहोगे, कोचिंग करते रहोगे, लोगों को मेंटोर करते रहोगे, तो आप करते 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 इतने एक्सपर्ट बन जाओगे, इतने एक्सपर्ट बन जाओगे कि बाद में लोग आपको जो चाहेंगे वो पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपने इतनी मास्टरी लाई उसके ऊपर, इतनी कुशलता लाई है। और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि सचिन तेंदुलकर के कवर ड्राइव्स या फिर जिस तरीके से वो बैटिंग करते थे वो बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, राइट। एंड नेक्स्ट उनका जो है मूव आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, कोच बनना चाहते हैं, तो आपको अपने लाइफ में कंफर्ट जोन जो है उसको तोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर कंफर्ट जोन में रहोगे तो आप अच्छे कोच नहीं बन सकते, अच्छे मेंटोर नहीं बन सकते, बिकॉज जो कंफर्ट जोन को ब्रेक कर चुका है वही लाइफ में सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आप जिम में जाते हैं, फिटनेस सेंटर में जाते हैं और आप जब मसल्स बिल्ड करना चाहते हैं और आप डंबल्स उठाते हैं, और अगर आपने 10 डंबल्स उठाने आसानी से उठा सकते हैं, मगर 11-12 के बाद जब वो डंबल्स उठता नहीं है या आपको बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बहुत स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है, तो जो 13वां 14वां जब उठाते ना, तो वो जो आप कंफर्ट जोन में जाके आप उसको उठाते हैं वही आपकी रियल स्ट्रेंथ बनती है, उसे ही मसल्स बनते हैं आपके। तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। जब मेरे सुबह के प्रोग्राम होते मॉर्निंग 6 o'clock, जहां पर 400-500 लोग मॉर्निंग में 6 बजे उठकर प्रोग्राम अटेंड करते हैं रेगुलर बेसिस पर, क्योंकि वो उन्होंने कंफर्ट जोन को ब्रेक कर दिया है।
कंफर्ट जोन को ब्रेक कर दिया। जो लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं वो बहुत सारे रीजन दे सकते हैं कि यार आज मैं भूल गया, मेरा अलार्म नहीं बजा है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें हो सकती है। मगर आपको अगर सफलता चाहिए तो आपको कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं फास्ट लेता हूं बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम है। सो ऑलवेज हैव अ प्लान बी, है ना। सचिन तेंदुलकर का एक बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट था प्लान बी। अगर ये प्लान ए काम नहीं करा तो प्लान बी उनके पास था। अगर इस तरीके से अगर बॉलिंग अच्छी नहीं हुई तो बैटिंग अच्छी करेंगे, बैटिंग अच्छी हुई तो बॉलिंग अच्छी करेंगे, कोई ना कोई ऑप्शंस उनके पास होते ही थे। उसके अलावा कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। आपको कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा। आप बहुत सारे लोगों को मैं देखा, बहुत सारे ट्रेनर्स, बहुत सारे कोच को मैं देखता हूं कि शुरुआत में मोटिवेशन में वो स्टार्ट तो कर लेते, मगर स्टार्ट करने के बाद जब उनको रिजल्ट्स नहीं आते हैं या जब उनको पैसा कमाते नहीं है तो धीरे धीरे वो ट्रेनिंग को छोड़ना शुरू कर देते हैं। सो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लगातार कोशिश करते रहिए, कंसिस्टेंसी रखिए, और अगर कंसिस्टेंसी रखोगे तो एक ना एक दिन आप उस मुकाम तक जरूर पहुंच सकते हैं। एंड उसके अलावा नेवर गिव अप, आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। मैंने अपने लाइफ में अप एंड डाउन्स बहुत देखे मेरे ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर। पैसे बहुत डालने पड़ते हैं, बहुत इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, कभी कभी लॉस भी प्रोग्राम करने पड़ते हैं, मगर तो भी हमने छोड़ा नहीं ट्रेनिंग इंडस्ट्री को। बिकॉज जब आप ट्रेनिंग को, अगर आपको पैशन है और इस पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया आपने, तो फिर डोंट थिंक अबाउट मनी, थिंक अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि आप किस तरीके से लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लोगों के लाइफ में सक्सेस स्टोरी बना सकते हैं। और ये जब आपका फोकस होता है तो पैसा बाय डिफॉल्ट आपके पीछे आता है। आज जब मैं कॉर्पोरेट में प्रोग्राम लेता हूं तो आई चार्ज 1,60,000 रुपीज फॉर 8 आवर्स, और मुझे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लिए इतना पैसा देता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द ट्रेनिंग, राइट, कंटेंट ऑफ द ट्रेनिंग, रिजल्ट ऑफ द ट्रेनिंग। सो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नेवर गिव अप एंड डू व्हाट यू लव। आप वही काम करिए जिस काम को आप पसंद करते हैं। और एज अ कोच, एज अ मेंटोर, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप वही टॉपिक को लेना शुरू करिए जिस टॉपिक को लेने में आपको मजा आता है, जिसमें आपकी मास्टरी है, जो आप जी रहे हैं, है ना, जो चीज आप जी रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, जो आप अपनी लाइफ में खुद बिलीव कर रहे हैं कि ये चीजों से लाइफ में लोगों के बदलाव आ सकता है, चेंज आ सकता है। तो वो टॉपिक पर आप जब बात करोगे, वो टॉपिक आप लेना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों को, सामने वालों को रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और आपको भी खुशी होगी क्योंकि आपको काम करने में मजा आ रहा है, वो टॉपिक लेने में मजा आ रहा है, राइट। सो डू व्हाट यू लव एंड फाइट बैक। अगर आपके लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आ जाए, कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, बाउंस बैक करना बहुत जरूरी है। अभी जैसे लॉकडाउन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाउंस बैक कर लो, है ना, बाउंस बैक कर लो। ये जब बाउंस बैक की आपको हैबिट लग जाएगी, ये माइंडसेट अगर आपके अंदर आ गया बाउंस बैक करने का, फिर आप दुनिया को जीत सकते हैं, राइट। सो सचिन तेंदुलकर ने बहुत बार बाउंस बैक किया, बिकॉज कितनी बार तो ऐसा हो गया, वो बहुत सारी सीरीज फ्लॉप गए मगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मगर वापस दोबारा उन्होंने बाउंस बैक किया और आगे बढ़ते गए। एंड ही इज वेरी हम्बल, वो बहुत हम्बल थे। सो ये एक बहुत जबरदस्त माइंडसेट है, हमें एज अ कोच, एज अ मेंटोर हमें डेवलप करना चाहिए। हमें थोड़ी सी सक्सेस मिल जाती है, हम हवा में उड़ जाते हैं, हमारे अंदर ईगो आ जाता है। तो जब ये ईगो आ जाएगा ना, तो फिर आप गए काम से। सो ईगो को गो करना पड़ेगा और हमेशा अपने आप को हम्बल रहना पड़ेगा, है ना। जितना आप हम्बल रहोगे, क्योंकि जिस पेड़ के ऊपर फल लगे होते हैं वो हमेशा झुका हुआ रहता है, और जिस फल के ऊपर पेड़ नहीं, यानी फल नहीं होते हैं, वो हमेशा डुलते रहता है या हवा डुलते रहता है। तो वैसे ही जिस इंसान के अंदर कुछ होता है चीज, वो हमेशा झुका हुआ रहता है। तो इंपॉर्टेंट चीज है बी हम्बल। एंड हेल्थ एंड फिटनेस, सचिन तेंदुलकर ये एकमात्र ऐसे क्रिकेटर है जिन्होंने इतने साल तक क्रिकेट खेला, इतने मैचेस खेले हैं, क्योंकि उनका फिटनेस उतना स्ट्रांग था। तो अगर एज अ कोच, एज अ मेंटोर, एज अ ट्रेनर, अगर आप स्टेज पर अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, विथ एनर्जी के साथ परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप अपनी हेल्थ के ऊपर, आपके फिटनेस के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छा माइंडसेट आपको डेवलप करना है हेल्थ और फिटनेस का, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो कुछ दिनों के बाद फिर आपको हेल्थ चैलेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे, एंड उसके बाद फिर आपको दिक्कत आना शुरू हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे, राइट। सो ये 11 चीज थी, ये माइंडसेट थे सचिन तेंदुलकर के। अभी हम जानते हैं जियो के माइंडसेट क्या है। क्विकली नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, जियो जो है, ये जियो इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ? इतना मुकेश अंबानी एशिया के नंबर 1 बने थे, इंडिया के पहले नंबर 1 थे, बाद में एशिया के नंबर 1 बने। क्यों? बिकॉज ऑफ जियो। तो जियो की क्या स्ट्रैटेजी थी, जियो की क्या माइंडसेट थे जो जियो को इतना बड़ा बना दिया? तो सबसे पहला माइंडसेट था, दैट इज कॉल्ड थिंक बिग एंड एग्जीक्यूट ऑन द ग्राउंड।
आपको बड़ा सोचना है एज अ ट्रेनर, मेंटर, कोच। आप जब बड़ा सोचेंगे, बड़ा कुछ करने का सोचेंगे और ग्राउंड लेवल पर काम करोगे, तब जाके आप वो कर सकते हैं। राइट, सो टेक मोर रिस्क, है ना, आपको ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत है। बिल्डिंग अ पाइपलाइन, जैसे जियो ने क्या किया, पाइपलाइन बिल्ड कर दिया और आज इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया, बहुत अमेजिंग नेटवर्क क्रिएट किया। उन्होंने पहले फ्री दे दिया, फ्री दे दे के क्या किया, उन्होंने सिर्फ पाइपलाइन बिल्ड कर दिया, नेटवर्क खड़ा किया, और आज इसी के लिए जियो इतना नंबर 1 बन गया। यूज वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट, दिस बेस्ट एडवर्टाइजमेंट। और मेरे प्रोग्राम के अंदर आपको बता दूं मैं, 85% लोग जो आते हैं वो सिर्फ रेफरेंस से आते हैं, सिर्फ रेफरेंस से। क्यों? बिकॉज ऑफ जो हम चीजें उनको डिलीवर करते हैं, जो चीज हम देते हैं, उनको इतना अच्छा लगता है, इतनी अच्छी क्वालिटी वो लेकर जाते हैं, इतना अच्छा नॉलेज लेकर जाते हैं, जो इतना चेंज लेकर जाते हैं, तो वही लोग और लोगों को लेकर आते हैं प्रोग्राम के अंदर। सो वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट इज अ बेस्ट एडवर्टाइजमेंट। ये फॉर्मूले को आप अपने ट्रेनिंग में, अपने कोचिंग में यूज कर सकते हैं, और आपके जो स्टूडेंट्स हैं वही आपके फ्री सेल्समैन होने चाहिए, फ्री सेल्समैन होने चाहिए। राइट, वही आपके पास और ज्यादा लोगों को लेकर आने चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अच्छी क्वालिटी के कंटेंट देंगे, या तो उनके अंदर अच्छे रिजल्ट्स देंगे आप। एंड नीड पेशेंस, आप कोई भी चीज करने से पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट मिनिमम 1000 डेज का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा कि 1000 डेज अगर आप लगातार एक ही चीज के ऊपर अगर आप फोकस करके काम करोगे, तो उसमें आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिल सकता है। मगर 1000 डेज कंप्लीट होने से पहले ही लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर धीरज नहीं होता है, उनके पेशेंस नहीं होते उनके अंदर, और ये पेशेंस नहीं होने की वजह से वो छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं। अभी इस लॉकडाउन का रिसर्च ये कहता है कि 85% लोगों का माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि जो पहले काम करते थे, जिस वजह से उनको पैसा आ रहा था, अब वो काम वो छोड़कर कोई दूसरा काम ढूंढ रहे। ये माइंडसेट हो चुका है लोगों का, क्योंकि पेशेंस नहीं, धीरज नहीं लोगों के अंदर। राइट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको ये जियो और ये जो चीजें आपको मैंने बताई, ये माइंडसेट अगर आपने एज अ कोच, एज अ मेंटोर अगर आप करोगे, तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के आधार पर मेरा 2 दिन का एक बहुत ही पावरफुल इवेंट होता है, जो मेरा सिग्नेचर इवेंट है, जो इंडिया का हाई एनर्जेटिक प्रोग्राम है, दैट इज कॉल्ड पावर मास्टरी। ये पावर मास्टरी जो प्रोग्राम है, ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थॉट प्रोसेस, बिलीफ, एटीट्यूड, इन सारे चीजों को लेकर हमने बनाया गया है। ये आपके इनर वर्ल्ड को, जो मैंने आपको पहले 4 वर्ल्ड बताए थे, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, तो ये चारों वर्ल्ड को बेहतर बनाने के लिए ये प्रोग्राम को डिजाइन किया है। नेक्स्ट, सो ये जो पावर मास्टरी प्रोग्राम है, ये पावर मास्टरी प्रोग्राम ये 2 दिन का होने जा रहा है, एंड नॉर्मली इसकी कॉस्ट होती है 12,500 रुपीज। नेक्स्ट प्लीज। सो यहां पर ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये आपको ब्रेन के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, आपको गेन होगा। मगर आप नॉर्मली स्पेंड करते पैसे शॉपिंग के लिए, मोबाइल फोन के ऊपर, अलग अलग जगह पर स्पेंड करोगे तो क्या होगा, लॉस होगा। नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो ये जो प्रोग्राम है, ये 19 एंड 20 फरवरी को, 19 और 20 फरवरी को होने जा रहा है, सैटरडे संडे, एंड इसका टाइमिंग है नेक्स्ट मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 6। राइट, मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 6 ये जो प्रोग्राम है, ये फुल डे का प्रोग्राम है, 2 दिन है। और अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर आना चाहते हैं, तो ये जो 10x मेंटरशिप है, ये जब आप लेंगे तो आपको ये प्रोग्राम उसमें मिल जाएगा, और ये 2 दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सो बिकॉज मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, ये जो मेंटरशिप का जो 10x प्रोग्राम है, ये जो मेंबरशिप है, ये मेंबरशिप लेने से आप अपने कोचिंग बिजनेस को, आपके ट्रेनिंग बिजनेस को, आपके इंडस्ट्री के अंदर आप एक नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप राइट डिसीजन लोगे, और राइट डिसीजन लेने के बाद ही आप अपने लाइफ में एक राइट पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। और इसी के लिए 10x मेंटोर क्लब जो है, ये बना हुआ है ये सारी चीजों को लेकर। सो हमारा एक ही मकसद है कि जो आज बिगिनर है, या जो लोग मेंटोर बनना चाहते हैं, या मेंटोर है, या ट्रेनर बनना चाहते हैं, या कोच बनना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको एक प्रॉपर मेंटोरशिप दिया जाए, जिससे वो अपने इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकते हैं। बिकॉज आज इंडिया के अंदर लाखों ट्रेनर्स बनते जा रहे हैं, लाखों कोचेस बनते जा रहे हैं, मगर प्रॉपर लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से, प्रॉपर मेंटोरशिप नहीं होने की वजह से, वो कुछ दिन काम करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर और इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं, और उसके बाद वो इंडस्ट्री को ब्लेम करते हैं कि यार ट्रेनिंग इंडस्ट्री में पैसा नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। मगर ये माइंडसेट, ये फिक्स माइंडसेट वाले इंसान का है। अगर ग्रोथ माइंडसेट वाले अगर आप है, तो इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ,
राइट, अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। मैंने अपने लाइफ में ऑलमोस्ट 20 साल में मेरे सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर मैंने ऑलमोस्ट 65 लाख से ज्यादा रुपए मैंने इन्वेस्ट किए। मैंने टॉनी रॉबिन्स से लेके सभी इंटरनेशनल ट्रेनर्स को मैंने अटेंड किया, लाइव प्रोग्राम्स। मेरे मेंटर टॉनी रॉबिन्स है, जो मैं लंदन से लेके सिंगापुर से लेके अलग अलग जगह पर जाके मैं सीख के आया हूं। ये सभी बेस्ट टू बेस्ट जो ट्रेनर्स है, उनके पास से मैंने मेंटरशिप लिया हुआ है। सो अगर आप भी अपने लाइफ में सचमुच अगर अच्छे ट्रेनर बनना चाहते हैं, अच्छे कोच बनना चाहते हैं, अच्छे मेंटोर बनना चाहते हैं, तो 10x मेंटोर जो क्लब है वो आप ज्वाइन कीजिए और आपके लाइफ में एक अमेजिंग जर्नी की शुरुआत कीजिए। तो सबसे पहले अपने आप के लिए एक बार जोरदार क्लैप हो जाए। लेवल 10 वाले, लेवल 10, कम ऑन, गिव क्लैप फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। सो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप चैट बॉक्स में जाइए और आपका एक वर्ड में ये सेशन कैसे लगा, एक वर्ड में मुझे बताइए, हाउ वाज द सेशन। आपको एक वर्ड में बताना है मुझे कि ये सेशन आपको कैसा लगा। Amazing, right? So thank you so much, Mahendra ji, for this power-packed session, right? I think काफी कुछ सीखने मिला हमारे attendees को in terms of कि mindset कितना बड़ा रोल प्ले करता है, और आपके जो examples दिए आपने regarding Sachin Tendulkar and Gio, I think these are some very inspirational examples, right? तो थैंक यू सो मच महेंद्र जी, आप टाइम निकालने के लिए। आई थिंक चैट्स में काफी अच्छा फीडबैक आ रहा है, गुड, इंसाइटफुल, ग्रेट, अमेजिंग, ऑसम, राइट? तो आई थिंक लोगों को आपकी एनर्जी पहुंच गई है। सो इट्स प्रीटी गुड स्टार्ट टू द 10x मेंटर समिट, राइट? सो एज महेंद्र जी सेड कि उनका वर्कशॉप आ रहा है, पावर मास्टरी वर्कशॉप, राइट? अब उसमें आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं? इट्स थ्रू द 10x मेंटर क्लब। वो मैं आपको बताऊंगा, आई विल शेयर विद यू गाइस कि how can you be part of the 10x mentor club, what is the 10x mentor club, but we are getting late, right? We are thoda sa off schedule, so it's now time to call our second speaker, that is Mr. Vivek Trivedi sir. So hello Vivek Trivedi sir, are you ready? Vivek ji? Yes sir, yes it absolutely awesome, right? So Vivek ji आज बहुत ही interesting topic लेने वाले हैं। He's going to talk about influence mastery for coaches. In the first session, we saw mindset कितना बड़ा play करता है to become a 10x mentor, right? अब Vivek ji he's going to talk about how can you use influence building for coaches, आपका brand बनाने के लिए, influence बनाने के लिए। तो Vivek ji के लिए, he is the father of 2 naughty kids, husband and of a musician wife. He's an entrepreneur turned recruitment evangelist, keynote speaker, guest lecturer, interview coach, social media influencer with more than 30,000 LinkedIn followers, marathon motivator, non-fiction author and born recruiter. Vivek ji ने हमारे साथ पहले भी past में he has done events for us and people really loved those events. I'm very sure कि ये event, ये जो next 20-30 minutes होने वाले, विवेक जी आपको बहुत अपना experience share करेंगे, बहुत अच्छे insights देंगे. So Vivek ji, stage is yours. Wow, thank you so much, and it's really such a great, wonderful, feeling to meet with so great people. I mean, I learned a lot from Mahendra ji, like that what he mentioned about ego ko jaane do, and 1,000+ days. So that's really just take a quick confirmation from our favorite mentogram team is that my screen is visible and rocking. Is it visible? Yes, now it is visible. Yes. Okay, superb. So I think guys, like let me just tell you something. 13th Feb क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए, एंड आई थिंक लाइक जस्ट वांट टू टेल यू, थोड़े से ना बीच हिंदी में कहावत है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, राइट? तो कुछ तो ये टेक्नोलॉजी वाले करते रहेंगे, वी नीड टू बियर विद दैट, बट आई सजेस्ट यू दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी पावर पैक सेशन। नेक्स्ट हाफ एन आवर, वो कहते हैं ना कि वो 70 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता, तो ये 30 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता है आपकी लर्निंग के लिए। तो लेट मी जस्ट स्टार्ट टेकिंग द कंप्लीट ऑनर एंड प्रिविलेज टू ट्रिब्यूट टू 2 मेजर इन्फ्लुएंसर जिनका आज बर्थडे है, राइट? सरोजनी नायडू जी और उनके
बर्थडे को हम हैप्पी नेशनल वुमेन्स डे के हिसाब से के ग्रुप में मनाते हैं. एंड श्रीमती सुषमा स्वराज जी, राइट, पुट ऑन द चैट R and R. Let me see how many of you can put on chat R and R. Respect and regard. Respect and regard for these two great ladies who have actually created such a great milestone. Let me see that, just put R and R. Amazing, amazing, Mr. Amar. That's great. Mera internet, I'm actually getting some issue that I think internet, okay. Yeah, voice issue is happening. I just bear with me. Okay, Joni Joseph has mentioned, Rashri Gopal has mentioned, Farzana has mentioned. Okay, so these are the people who have actually created such a great influence, and I request all of you to please stay tuned for a very power pack session just now. Okay, let's see, let's play a fast finger first. जैसे कौन बनेगा करोड़पति में श्री अमिताभ जी खेलते हैं. Okay, let me know that how many of you are ready to take notes. Type ready. Type ready in the comment box. Okay, Johnny, that's great. Sudarshan, very well. Ranjan, Rajan, Mani, very well. Anand, very well. Amir, ready. Suraj, ready. Aditya, ready. Neeraj, ready. Rashri, ready. Anuradha, ready. It's like a bullet train. It's like a bullet train. Thank you guys so much. Amazingly great. S. Chandrasekhar, ready. Gunwant, ready. Sonu Bharadwaj, ready. Farzana Shakil, ready. Okay, now how many of you want to be ready, like, for my language? English hona chahiye, Hindi hona chahiye, dono mix hona chahiye. Okay, just type mix if you want mixed language. Thoda Hindi, thoda English, right? So be ready for that. Okay, doctor. Okay, Suraj Kumar has mentioned that. Anuradha has mentioned. Amazing, amazing guys. English, absolutely. I love that word, right? Anandji, very well mentioned. Okay, Sunil Raj mentioned English. Amazingly great. And thoda important, commitment, right? How many of you are committed for next 30 minutes? If you are committed, just type committed. Kuch bhi nahi. I respect what Siddharth started with the discussion. Where focus goes, energy flows, right? ये 30 मिनट आपका पूरा committed होना चाहिए. Amazingly great. Give lots of thumbs up. Lots of thumbs up. Let me see that how many of you are committed. Okay, Gunwan, Farzana, Tushar Raj, Arshi Parveen. That's really amazingly great. Okay, give lots of thumbs up so that you can understand that this commitment is always for you. Okay. मूविंग ऑन, वन मोर, फर्स्ट इज फिंगर फेस्ट. बहुत कुछ मजा आने वाला है, बहुत कुछ हम लोग खेलेंगे और खेलते ही रहेंगे और खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाएंगे. तो बी रेडी फॉर दैट. ओके, नाउ आई वांट योर आंसर्स. और थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है. ओके, बिफोर गिविंग एन आंसर. पहले वाले में दिमाग नहीं लगाना था, अब थोड़ा दिमाग लगाना है. व्हाई वी कैन नॉट डू एनीथिंग व्हिच वी वांट टू डू? आंसर, योर आंसर. व्हाई वी कैन नॉट डू एनीथिंग व्हिच वी वांट टू डू? जस्ट योर आंसर. Okay. Okay. Rajan Mani mentioned, my wife tells me that I cannot do it. Okay. Amir Ahmed, not serious. Okay. Because we don't put our whole focus on it. Okay. No discipline, doubt, belief. We don't take our first. Okay. We don't believe in that. Okay. Clarity. That's right. Lack of focus. Amazingly great. Amazing. Amazing. Mindset. Absolutely. Fear of failure. No focus. Amazingly great. Not to prioritize. Confidence. Amazingly amazing. Great. Okay, now let's second question. Why we cannot share our thought to more people even if we want? हम लोगों के पास बहुत अच्छे विचार होते हैं लोगों को शेयर करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद हम अपने विचार लोगों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, शेयर नहीं कर पाते हैं. क्या कारण हो सकता है? What you think can be one reason why we are not able to share the विचार or share the thoughts? लोग क्या कहेंगे? Very well. Okay. They make fun, inferiority, no self-confidence, no connection. I like that. I like that. Yeah, no judgment. Okay, hesitation. Amazingly great. And the third one, because the audience doesn't have the same mindset to understand the truth. Amazingly. Now, third thing, why we cannot follow everyone except ओनली फ्यू पीपल. ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग बड़े ज्यादा हमसे कनेक्ट हो जाते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं उनको हम फॉलो भी नहीं करते, उनसे हम बड़ा दूर ही बना के रखते हैं, राइट? तो व्हाट्स दैट वन थिंग, राइट? लेट मी जस्ट अंडरस्टैंड वन सेकंड फ्रॉम यू. इज दैट व्हाट कैन बी वन आंसर? ओके, वेरी फ्यू पीपल इन्फ्लुएंसेस. एब्सोल्युटली सुनील, वेरी वेल आंसर, वेरी वेल आंसर. एंड आई एम टेलिंग यू, इन दिस सेशन यू आर गोइंग टू गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ द गिफ्ट्स, lots and lots of the prizes, and lots of the contest.
Okay, because of the same wavelength, amazingly great Dimple Kapoor. Okay, you can either put to host and panelist or you can put it to everyone. I leave the choice to you, क्योंकि कुछ लोग confidential रखना चाहते हैं, और अगर वो रखना चाहते हैं तो it's absolutely, it's absolutely fine. But only the thing is that you need to keep on sharing your information, right? So influence is the one thing major where it comes out is that ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग सिर्फ कुछ लोगों को फॉलो करते हैं, they don't follow everyone. हम जबान नहीं मिलाते. Okay, that's good, Dr. Naren. I like that. Okay, so that's amazingly great. Now let me tell you, thoda sa na, I can see that there is some internet connection issue which is happening. So please bear with me. I think the recording will be available. So like ये कहीं से भी हो सकता है, because there are so many people who are joining today. So there may be an issue from the Zoom also, or there are only two people. Two things happening nowadays: either Zoom or Boom. Okay. Yes. So these are the three things which is coming out. Is one is called clarity, second one is called connect, and third one is called charisma. These are the three things, right? Why we cannot do what we want to do? Why? Because we don't have a clarity. How many of you agree? Just type agree. Why we cannot share our knowledge to the people whom we want to share? Because of the low on the connection side. We don't have a connect. And third thing is related to charisma. Why we actually connect with a few people and follow those people. सबको हम फॉलो नहीं करते, हम लोग सिर्फ कुछ लोगों को फॉलो करते हैं. एंड इफ आई कैन बी वेरी क्लियर, कुछ लोगों को जिनको हम उंगली पे गिन सकते हैं. Right? What we call it as like, very few people, and these people are influencers. And why they are influencers? Because influencer is the one who have clarity, influencer is the one who have connect, influencer is the one who have charisma. Okay, so if you are clear with 3C concept, just type 3C. Let me see how many of you are understanding something called as 3C. Okay, amazingly great. Amir Mohammed 3C, Rajiv, okay, that's great. Sudarshan 3C, Rashri Gopal 3C, Pravi 3C, Vikas Dhawan 3C, Anuradha Sharma 3C, C. Okay, that's great. Amazingly great. Suraj Kumar 3C. Okay, so these are the 3C, which is the first learning today, is that clarity, connect, and charisma are three things which is required for any kind of influencer. Okay, now let me tell you something about me. And before we start, do you want to know who am I? Akhir hai kaun? I truly appreciate Siddhartha has started that way. Why I do what I do? जो मैं कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं? And what you will learn today, right? If you are okay with that, just type BIO. Bring it on with lots of smileys. I love emojis, and let's see that how many of you can put the smileys on the complete chat box. Let the chat box get completely bombarded with your comments. Okay, type BIO if you want to know about that. Okay, amazingly great Suraj Kumar, Praveen, amazingly Sudarshan, Amir Ahmad, Sunil, amazingly great Anand, Arshi Parvin, amazing. Type BIO, bring it on, right? Dimple Kapoor, amazingly great. BOI, Bank of India. Okay, BIO, Govind. Okay, that's great. Dimple Kapoor, very well. Super, right? So here's a quick input about myself, which I always say that. And always take notes, because I will be telling you that where to take a screenshot. I will be telling you that where you can take hand notes, and I will be sharing you where you need to take digital notes. So be ready for that, right? So just to introduce myself, we all are a family people and father of 2 Nordic kids, husband of musician wife, entrepreneur turned recruitment evangelist, keynote speaker, guest lecturer to various IIT, IIM, Narsi Moji, 25 plus management institute, interview coach, social media influencer, marathon motivator, non-fiction author, and born recruiter. Okay, so what does it mean? It means that if you are having a passion, you can create a profession around. I'll definitely connect to Mr. Mahendra here. Is that when he mentioned that, like, passion ko profession banana hai. And that's how you can see the live example here is that I actually created a profession around my passion. These are the books which is already published by me, and many things will come to you today as a complimentary also. So be ready for that. Okay, certification and all that, you can actually watch that. It's all there, right? How many of you love gift? And here is one for you.
type love with love emojis. 13 Feb, फरवरी है, love का महीना है, that way all, right? Just type love gift and let me tell you that this is coming to you after this session today. Amazing. Amir Ahmad, Sai Parveen, okay, Dr. Praveen, okay, Mukesh, Mahesh, Suresh, Sarashri Gopal, Gulwant, okay, just type love, love, love. थोड़ा सा मेहनत करो, मेहनत करो, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है. क्या करना है? Yes, go to you know emojis, emoticons, right? सिर्फ लव से लिख के काम नहीं चलेगा. आई लव गिफ्ट और साथ में सारे ये इमोजिकॉन्स भी. यस यस यस, एब्सोल्युटली. हरप्रीत कौर, वेरी वेल, वेरी वेल. इसी को कॉपी पेस्ट कर दो. अश्विन, राष्ट्रीय मनी, अमेजिंगली ग्रेट, राइट? सो दिस इज कमिंग टू यू after the session. Mohabbat, Pankaj ji, amazingly great, super, amazing, amazing. Okay, so how many? So this is coming to you and after this session, so be ready for that. Now the next thing, एक कॉन्टेस्ट भी है. कॉन्टेस्ट क्या है? एक सरप्राइज है. जो दो सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होंगे यहाँ पे, दे विल गेट माय कंटेंट कैलेंडर which is completely curated by me, and this is all related to LinkedIn. Okay, that how you can plan for your content. Monday को अपने को क्या करना चाहिए, Tuesday को क्या करना चाहिए, Wednesday को क्या करना चाहिए, all those things are very very much very clearly defined here, which we call it the best practice. So now if you are ready for this surprise, type I will win with thumbs up. Let me see, because your chat is getting recorded. Your chat is actually, yes, absolutely great. Aman, okay, Anubhav, Sonu Bharadwaj. No, thumbs up. I want thumbs up. Abhinav Srivastav, Dimple Kapoor, amazing. Abhijit Sen Gupta, Akshata, Arshi Parveen, Neeraj Kumar, Rahul Kumar, amazingly great, right? So I wish you all the very great luck, because today you are having a chance to win this since you are attending this workshop. And the big thing, one more biggest surprise at the end of the session. So be ready for that. क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, all those things you will come to know by the end of the session. So please be ready for that. बहुत ही बड़ा surprise है. Okay, so I hope you all are ready with that. Now flashback, coming back, थोड़ी सी पुरानी कहानी पे वापस आते हैं. Clarity, connect, charisma. Influencer is the one who have clarity. Influencer is the one who have connect, and influencer is the one who has charisma. Right? Now I'll tell you something which is very, very important, and I want every one of you to stop on the chat. अब chat पे कोई नहीं आएगा. Right? आप try to absorb the knowledge. क्योंकि next 1 hour में, including me and Sanjeev Bhatia ji, हम लोग काफी कुछ आपको लिंक्डइन के बारे में बताने वाले हैं. और हो सकता है कि आप उसमें से बहुत चीजों को जानते हो सकता है कि कुछ चीजें आपको नहीं मिले. तो जो चीजें नहीं मिले उनको आप आज नोट करना एंड स्टार्ट डूइंग इट, बिकॉज लिंक्डइन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेटफॉर्म to create your influencer persona, and how you can create that. Today you are getting to know absolutely in a very clear step manner. मतलब कहते हैं ना उसको स्टेप बाय स्टेप. तो आज वो चीजें आपको मिलने वाली हैं. Be ready for that. Okay, and if you are having a question and answer, I love to take question and answer. Or अगर just type on the Q&A. To the best of my knowledge I will share that. उसके अलावा अगर आपको लगता है कि you can actually, because of some time issue अगर वो नहीं हो पा रहा है, तो you can connect with me on LinkedIn also, and I will be more than happy to take your questions that way. Okay, and let's start something which is called as framework, right? So just want to know only from Siddharth or Mithu is that if my screen is clear and visible. Yeah, Vivek ji. All good. Thank you so much. Right. So just start taking note, क्योंकि अब आप में से कोई भी chat पे नहीं आएगा, right? Because now the content is started. And next 10 minutes we will try to cover all this content. However, if you are having a question and answer, I will take up all the questions at the end of the session, and you can put in the Q&A also, right? But take lots and lots of the notes. Okay. When you are on the LinkedIn or when you are on the influencer framework, choose only one interest. This can be job, this can be business, this can be influence, right? So just choose one interest and take a screenshot of this particular screen. Take a screenshot so that you can always remember that I need to take only one interest. I did not have to dilute my focus, right? Second is that N for number.
what we are doing, we are decoding your influencer word. I for interest, N for number. अब I जो है वो पहला स्टेप क्या है? It's only one interest. पहला स्टेप है, एक ही चीज हमको देखनी है. क्या देखनी है? या तो हम जॉब रिलेटेड कंटेंट डालेंगे, कैसे डालेंगे, दैट लीव इट असाइड, आई विल टेल यू इन शॉर्ट वाइल, राइट. लेकिन आपका इंटेंशन सिर्फ एक ही होना चाहिए, इंटरेस्ट एक ही होना चाहिए, जॉब हो, बिजनेस हो, इन्फ्लुएंस हो, राइट. दैट्स वन. सेकंड इज कॉल्ड एज नंबर. दो ही नंबर आपको ध्यान में रखने हैं. यू जस्ट नीड टू कीप ओनली टू नंबर इन अ माइंड. वन इज दैट हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन एनी सोशल मीडिया, okay, and what is an impact which you are getting there. And I will tell you one of the very great what I can say, the metrics at the end of the session, when you can evaluate that how much time, say for example, if I'm spending 30 minutes on LinkedIn, what is an impact I'm getting, right? Second is that if I'm spending 20 minutes on LinkedIn, what is an impact I'm getting? If I'm spending 10 minutes on LinkedIn, what is an impact I'm getting? So time versus impact, इसके ऊपर हम discuss करेंगे. Then third one is called as fillers. Okay, I may be little fast on that, but I want you to take note as much as possible, because this is something which is not available on Google. I'll repeat, on Google or YouTube. Okay, so in this sequential order. Okay, so I suggest you take a note and start practicing it from today onwards. चूज मेजर थ्री फिलर. हम लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं, हैशटैग्स कौन से यूज करने हैं, कीवर्ड्स कौन से यूज करने हैं. CTA, लेट मी राइट ऑन द चैट फॉर एवरीवन. CTA इज कॉल्ड एज कॉल टू एक्शन. ओके, CTA इज कॉल्ड एज कॉल टू एक्शन. मतलब आपको यह पता होना चाहिए कि आप किस लिए लिंक्डइन पे हो. Do you want to sell your course? Do you want to push your coaching? Do you want to have one-on-one discussion? Do you are looking for a job, or do you are looking for, like, any kind of connection building, networking, all those things? And I keep on doing some of this LinkedIn polls and all that, so I'm sure that people are aware about that, right? So this is call to action, right? Absolutely. Yeah. Hashtag. You need to be very clear. 3 हैशटैग आपको फॉलो करने चाहिए. कौन से 3 हैशटैग होंगे वो भी अभी आपको बताऊंगा. कीवर्ड्स कैसे आप निकालोगे, बिकॉज आई डिड माय ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लिंक्डइन प्रोफाइल एंड आई बिकेम top 100. I'll not say top 10, top 100. And in fact, I started coming on the first page on 3 keywords which I did an optimization for myself without taking support of any digital marketing agency, without taking support of any paid media, without taking support of any kind of influencer videos, right, or micro influencer videos. So I'm going to share you all those secrets right now. Hashtag keyword CTA, right? So these are the third thing. F जो है वो आपका influencer में तीसरा word है. Let me repeat once again. I for interest, N for numbers, F for fillers. कौन से fillers होंगे? तीसरा स्टेप है, 3 fillers होंगे. Hashtag keyword call to action, right? Then we are moving on to the fourth. There are 4 different types of long form content is there, and Sanjeev ji is king for that. Let me appreciate, let me respect him, because I learned a lot from his post, and I really request you that you can actually go through the line by line of his post. That's amazing. He's a content king, no second thought. 4 different types of long form content. How you can create with your summary. Profile summary जो होती है ना, बहुत से लोगों को पता नहीं है. 2600 वर्ड्स की प्रोफाइल समरी होती है, राइट. हम क्या करते हैं, हम जनरली 150 वर्ड, 200 वर्ड, 10 लाइन, 5 लाइन लिख करके धन्यवाद कर लेते हैं. बट यू कैन एक्चुअली क्रिएट समरी, एंड आई विल गिव यू द कंप्लीट रूट आल्सो, दैट हाउ, कहते हैं ना कि मतलब हर एक चीज को अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में करो तो इट कैन एक्चुअली गिव यू द 10x रिजल्ट. समरी एक चीज हो गई. आर्टिकल, okay, that what type of an article, that we will definitely discuss little later on. Post, these are all long form content. Long form content कौन से होते हैं कि जहां पर आप thousands या 2000 words का प्रयोग करके you can actually share your communication or share your idea to the people. Summary, article, post, and newsletter. Right now, LinkedIn has already started giving you the opportunity to create your own newsletter and build up your community. Many of you are coach, mentor, and even like educators also, what I can see right now.
every one of you can start creating your newsletter, right? और कैसे करना है आपको, एक ना क्रिएटर मोड होता है लिंक्डइन पे, there you can just update, just click on that creator mode, that your profile will have a creator mode, and then you will get a chance from the newsletter. How you can create a newsletter, or LinkedIn is actually right now using this newsletter in a beta version, मतलब हर एक को नहीं अभी चांस मिल रहा है, बट आपको ये चांस मिल सकता है. कंटेंट वाला जो आपका टैब है, दैट यू कैन जस्ट ओपन इट एंड प्रोबेबली यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग योर न्यूज़लेटर. सो आई विल रिपीट वंस अगेन. आई फॉर इंटरेस्ट, एन फॉर नंबर्स, एफ फॉर फिलर्स, एल फॉर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट. और चार ही तरीके के लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो. यू फॉर अंडरस्टैंड. ओके, व्हाट टाइप ऑफ connection, there are various type of secrets which is there. हम लोग जनरली क्या करते हैं, टेक अ फोटोग्राफ, टेक अ स्क्रीनशॉट हियर, राइट, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू नीड टू नो that how can you do the connection, connect through second degree connection. If you don't know that, I will be more than happy to tell you that how you can do that. Put a question and answer, I will help you that. Connect through email, right? आप उनको डायरेक्टली ईमेल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो. कनेक्ट थ्रू ग्रुप, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? बहुत चीजें ऐसी है जो कॉमन है, बहुत सी चीजें ऐसी है जो अनकॉमन है, एंड आई एम शेयरिंग यू बोथ मिक्स टुगेदर. कहते हैं ना कि मतलब सारी चीजें अनकॉमन बता दिया तो भी गड़बड़ है, सारी चीजें सिंपल बता दी तो भी गड़बड़ है. सो दैट इज अ रीजन, कनेक्ट थ्रू ग्रुप. और उसमें क्या करना है आपको, 3VA कॉन्सेप्ट फॉलो करना है. 3 बार आपको वैल्यू देनी है और 1 बार आपको आस्क लेना है. What does it mean is that give value to the people who are the part of the group. Don't spam saying that I want this, I want this, I want this, right? कहते हैं ना कि मतलब आप पहले लोगों को दो और फिर उनसे एक्सपेक्ट करो. So 3 times always look forward that how you can give value, and then 4th time as an ask. Connect through content. You can create a content and then you can see that how the people are very much getting connected to you, and even with the poll creation also. जो लोग आपके पास yes vote करेंगे, no vote करेंगे, last 14 days I'm actually running 1 poll per day on LinkedIn, and you won't believe, every day I'm getting more than 100 plus invitation requests. And I don't accept all the invitation requests, but I actually build up the community and the network which can be resonate with my objective and a vision, right? So I suggest you that there are the 5 different types of connection secrets which you need, which you can follow, and then 6 different ways to connect with people. There's a vanity URL link, right? एक बार आप सर्च कर लो, just take a note of it, and even because 30 minutes is pretty less to do that, it's actually 2-hour workshop kind of content, but एक बार आप YouTube में भी check कर लेना that how you can create a vanity URL link. Okay, I will be more than happy to share you all those things in my live workshop which is happening on 19th Feb. So be ready for that. How you can draft your personal message, there's a complete framework, there's a complete structure to it, and I will help you that. How you can establish authority, कहते हैं ना कि author and authority goes together. So I am myself is an author with 3 books, and my first book got rejected for 48 times. खाली 2 बार रह गया था, नहीं तो हाफ सेंचुरी हो जाता, right? 48 times rejection के बाद अगर कोई book बनती है तो then you actually get to know so many things, and I can help you in terms of getting your book also, in which I will explain you in a short while. But you need to be an author if you want to be an authority. Visit the premium profile. See, premium profile का एक फीचर है कि वहां पर आप they are able to see who viewed your profile. Okay, so many of the premium people, they always use this feature, and since you are not a premium person but you are actually can connect with any person who is having premium profile in that, right? Face to face recollect, मैं किसी से आज यहाँ मिला, the first thing first I should do is that I should actually send a invitation request. Keyword optimization, as I gave my own example, choose your keyword, choose your wise keyword, and you can actually plan to do an optimization for that, right? And I will help you in terms of envisaging, evaluating, and exploring the keyword, because this is something which we call it as an explore site. Then network, कहते हैं ना कि जो चुड़ैल होती है वो भी 7 द्वार छोड़ करके अटैक करती है, राइट? तो वो 7 द्वार क्या है, वो 7 द्वार यहाँ पर होते हैं. ओके, विच आर द नियरेस्ट नेटवर्क, बट वी जनरली डोंट अवेयर अबाउट.
Your family, just see that how many of the people from your family is connected on the LinkedIn, is on the LinkedIn. सबसे पहले आप उनको रिक्वेस्ट करो, who are the relative who are there, institutional जिनके साथ आपने पढ़ाई की है. Okay, though you may be, I may be backbencher also, but does not matter, अगर connect है तो connect. Okay, so institutional, employment जिनके साथ आपने काम किया है, this may be all your ex colleague, neighborhood, सोसाइटी में लोग मिलते हैं, चाय पीते हैं. Okay, just see, go watch and see that, like, whether there is this person on LinkedIn. If yes, share a request. Dreamer, ज्ञानी लोग हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, भरी पड़ी है. कभी गुड मॉर्निंग के मैसेज आते हैं, कभी गुड इवनिंग के मैसेज आते हैं, और भरे रहते हैं. ओके, बट अगर आपको ऐसे ज्ञानी लोग मिलते हैं और वो कभी लिंक्डइन का, दे कैन स्टार्ट पोस्टिंग इट, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, they are always having something to say, and they don't mind taking your connection forward, and that we call it as a dreamer people. Okay, and connect with those people because they love to connect. Stranger, right, where you don't know that person in very detail, but probably या तो आपने कहीं उनकी टॉक देख ली, या कहीं उनको आपने सुन लिया, या कहीं उनके बारे में सुन लिया, whom you don't know very well. Shark Tank के, there are so many sharks are there. So these are all stranger for you, but tomorrow they can become connect for you. So that's how. Always remember FRIENDS, friends, right? 7 segment to connect, and these are very, very, very common connects. Many people don't evaluate that, और वो क्या करते हैं कि वो सबसे पहले जो ज्ञानी लोग हैं, उन्हीं को कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं. और ज्ञानी लोग तो वैसे ज्ञान का भंडार होते हैं. स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, राइट, कि मतलब वो तो विद्वान है, वो तो हर जगह, मतलब उनको हर जगह पूछा जा रहा है. तो व्हाट हैपन इज दैट दे ऑलवेज शो दैट कि ठीक है, अभी आराम से करेंगे, दैट वे. बट दीज आर द पीपल हु आर रेडी टू टेक योर इन्विटेशन. Okay, so just you need to see that how you can leverage that. Moving on to the 8th side, content side. Okay, and this is one of the best practice which I understood from many of the LinkedIn influencer who follow. Okay, and this is more to give a structured approach to you. Take a photograph. Again, I'm telling you, take a photograph. And let me take a quick confirmation from Siddharth once again. Is all audio visual all okay? Yeah. Awesome, awesome. Thank you so much. So 8 type of content, कहते हैं ना कि 7 द्वार. ओके, वो पुरानी पिक्चरों में कहावत थी ना कि सोमवार को ये हुआ, मंगलवार को वो हुआ, all those things. So be ready for that, and you can also create the content and use this format, that how you can evaluate your influence and how you can create your influence. M for Monday, Monday motivational. T for tricky Tuesday. W for wonderful Wednesday. You can say wow Wednesday also. F for Thursday, thoughtful Thursday. F for frank Fridays. S for successful Saturday and Sunday. One poll where you will get a highest engagement, and one subject success story for long form article. 2000 word के लिए आपके पास में ये सक्सेस स्टोरी आप कैसे क्रिएट करोगे? All those things are there. So there are 8 type of content which can be planned in advance. I'll repeat quickly once again. The influencer: I for interest, N for numbers, F for fillers, L for long form, U for understand, E for explore, N for network, and C for content. 9. E again for eminent personalities to follow. सत्संगति किम न करोति पुंसाम. सत्संगति जो है वो सबसे ज्यादा आपको इम्पैक्ट करती है. कहते हैं ना कि अगर आप 5 लोगों से जो मिलते हो, देखते हो, उन्हीं की तरह आप हो जाते हो. सेम थिंग हैपेंस हियर. You have to look forward to 3 eminent personalities to follow. और वो 3 कौन होंगे? 3 subject related people. आपका जो सब्जेक्ट है, this can be artificial intelligence, deep learning, IoT, pharma, retail, anything. Choose only 3. Okay, eminent personalities to follow. Why? Because they keep on writing and you will keep on getting information. 3 thought leaders. This can be from your segment. If you're an author, coach, entrepreneur, businessman, and XYZ, just see that who are the 3 top thought leader who are sharing the content on the regular basis. 3 global personalities. Why? Because you need to be up on the game, and you need to see that how this can be very, very, very comfortable for you. Okay, so subject related, बहुत simple है. This can be Bill Gates also.
right? This can be Elon Musk also. But you have to see that what type of global personalities you are following, क्योंकि follow का there is no limitations on the LinkedIn. ओके और अभी संजीव जी बहुत कुछ इसके बारे में और बताएंगे आपको, बी रेडी फॉर दैट. ओके क्योंकि ये 1 घंटे आपसे कोई नहीं छीन सकता है लिंक्डइन के नॉलेज से रिलेटेड एंड इवन इन्फ्लुएंसर्स से रिलेटेड. सो ग्लोबल पर्सनालिटीज ऑलवेज फील दैट इफ यू आर नॉट डूइंग इट, स्टार्ट डूइंग इट टुडे एंड दैट्स माय कमिटमेंट टू यू. द लास्ट पॉइंट, आर पे आ गए हम लोग, ठीक है, पता ही नहीं लगा. पहला हमने देखा था इंटरेस्ट और अब हम आर पे आ गए, रिव्यू. 10 पॉइंट ऐसे होते हैं जिसको आपको रिव्यू करना चाहिए मंथली बेसिस पे. कौन से 10 पॉइंट है? नंबर ऑफ फर्स्ट डिग्री कनेक्शन, अप्रैल में कितने थे, मार्च में कितने थे, मई में कितने थे, क्या हुआ. ओके, आई विल गिव माय एग्जांपल लाइक यू नो once we will be coming on the boot camp and when I will be sharing you all the detail also, and I will tell you that I started in 2008 जब लिंक्डइन काफी स्टार्ट हो रहा था, मतलब यू नो लिंक्डइन वाज एट द अर्ली स्टेज एंड that time I understood the secret. And how I understood the secret, because many of you know that I'm from an HR background, और हम लोग क्या करते थे कि टैलेंट एक्विजिशन के लिए लिंक्डइन को यूज करते थे. तो जब हम टैलेंट एक्विजिशन के लिए लिंक्डइन को यूज करते थे, रिक्रूटमेंट के लिए यूज करते थे, तो वी स्टार्टेड गेटिंग द सीक्रेट्स ऑफ द लिंक्डइन. एंड टुडे आई एम शेयरिंग यू that how this grew from 300 to 30,000 follower in due course of time with a structured approach. Okay, and if I can do, why not you, right? So 10 steps which we need to review is that first degree connection, second degree connection, how many LinkedIn group you are part of it, how many LinkedIn posts you shared, right? Number of recommendation, profile checklist adherence. I will share you profile checklist also, you can just message me on the LinkedIn. Number of recommendation, how many recommendation you have shared. Okay, नंबर ऑफ प्रोफाइल व्यूज, बहुत इजी है, लिंक्डइन आपको एनालिटिक्स देता है. नंबर ऑफ सर्च अपीयरेंस, कितने लोग आपको सर्च कर रहे हैं. You are all coach, author and entrepreneur and even the job seeker also, and even like you know working professional, you need to see that whether you are coming to search appearance, yes or no. Number of post views, कितने लोगों ने आपके पोस्ट को व्यू किया है. You are only the person who can see that. And number of total followers. Okay, Rome was not built in a day. तो ऐसे ही आपके फॉलोवर्स जो है थोड़ा थोड़ा समय लगेगा लेकिन बनेंगे. And this is something which I want to take every one of you to take a photograph. Okay, because you're here, it's a complete summary of what 10-step influencer framework, what I told you. Interest, I for interest, N for numbers, F for fix, the 3 pillar, L for long form format, U for understand, the 5 invitation secret, how you can actually invite more and more people, E to explore 6 networking ways, N for near network, 7 segment, friends ka example I given you, family, relative, institutional, employment, neighborhood, dreamer and stranger. Content planning, I gave you 8 type of content planning. Eminent personalities, what type of personalities you follow, and review is related to that, what type of monthly review is there, right? So with this, just want to know how many of you now come to the chat. Okay, now come to the chat and type one word which you understood in this 10 concept. Just one word. Everyone. Now I want everyone. Blueprint, influencer, absolutely great. Expansion, Rome not in a day. Content, amazingly great. Okay, Akshata mentioned communication skills, 360-degree coverage. Okay, popular. Okay, सब लोग जागृत हो गए. That's amazingly great. Okay, and now just in a quick 2 minutes, I will tell you to just click on the link, right? So that you all can get your gift also, whatever is there. And this is something which we call as an influencer roadmap, right? Today, before today, you were unconscious incompetence. राइट मतलब आपको पता नहीं था लेकिन आप काम कर रहे थे. आज आपको ये पता लगा कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में आप आ गए हो. अभी आप कॉम्पिटेंट नहीं हुए हो. कॉम्पिटेंट कब होगे? जबकि आपको एक रोड मैप मिलेगा, जब आप उसको फॉलो करोगे, एंड यू नो देन यू विल बिकम कॉन्शियस कॉम्पिटेंस. और ये जर्नी है, इन्फ्लुएंसर रोड मैप की जर्नी है. और यहां पर क्या होता है, आपको एक 90 डेज का इन्फ्लुएंस चैलेंज है which we just share the people, and 1 year influence mastery framework also. Okay, तो क्या होता है, now what we cover in 90 days challenge that I'm just sharing you right now, but before that
let me just share you one particular link where you can get the detail of, you can actually share the feedback also. Just give me only 1 second. I think we have a Google form, so Yeah. maybe I can take it from here. Yeah, sure. That's absolutely fine. And just 1 second. Yeah, so Google form any which ways is coming to you, and here we go. Okay. So this is one feedback which I suggest every one of you to please share and be ready for your complete question and answer also, right? So let me understand from you is that, like, how many of you are interested for particular boot camp which we are doing on 19th Feb? Just type interest in the comment box. So then I will share you that, like, that what all things are there, and probably you will get a detailed email. Type interest in the comment box if you want to know more about that, what we cover in a boot camp, and then we can inform you accordingly. G Singh interested, and it's really one 10x mentor summit, and I love the such a great encouragement from the audience. Thank you so much, Siddharth. Awesome. Thank you so much, Vivek ji, for your time today. I think you shared really insightful framework and strategies for people to actually implement kare. Because like there are so many mentors, so many people sharing just knowledge, but I think आपने अपना experience एक framework में share किया. I think that is what matters, right? And we are receiving a lot of questions actually. So let me just address them one by one. So पहले तो if you have any question for the speaker, please Q&A tab. There is a Q&A tab on Zoom. You please go there, ask your question, and the speaker जिसके लिए वो question है, he or she will be answering it after their session. Okay, so they'll be typing out the answer for you. That's number one. People are asking about like how can they enroll for the boot camp, right? So for that, let me introduce you to the 10x Mentor Club that we have, right? We have created this particular club, a particular community of mentors, experts, coaches, course creators, right, across India, who wants to kind of do their mentoring, take their mentoring business 10x, right? You get everything, not only the bootcamp access to all our speakers, but you get the bonuses. You also get a technology system, right? Mentogram is an online platform for mentors, right? So you also get the Mentogram platform to host your courses, landing page, funnels, all these things, ना जिसका आपके पास बहुत ज्ञान है, but the implementation is lacking, right? So that is somewhere that is why we created this 10x Mentor Club, right? To give you the right technology support and to give you the right kind of mentoring in the very affordable and very efficient manner, so that you focus on what you know the best, right? आपको आपका knowledge, आपकी skills, expertise उसको better करने में focus करना है, right? And you leave the remaining, like branding कैसे करे, marketing कैसे करे, on the Mentogram team and our pool of mentors, right? But this is an exclusive club. We cannot invite every one of you here, right? We have more than 150 participants right now. We cannot invite each and every one of you. So we have a Google form link. आप apply कीजिए उसमें, you give your information, you share your coaching idea, you share how much, what is your current sales, how much is your revenue target, and then we will kind of we'll share it with our mentors. And if we find it a good fit, we will invite you to our 10x Mentor Club. Trust me, we have like more than 100 mentors in the 10x Mentor Club, and they find it very useful. They find it very efficient. उनके सिर से जो वो होता है ना kind of workload, it has become very easy because there are so many bonuses, so many templates, right? And as you can see on the screen, there is a milestone approach, right? Maybe I can ask my team member to send the link again. Aman, can you please share the link again in the chat, right?
So the club is based on a milestone approach, right? कि हम first milestone hit करेंगे, it's discovering your niche, finalizing a course idea. Then there's the second milestone, that how can you create your digital asset like courses, coaching programs, how can you digitize that? The third milestone is how can you get your growth system ready? And then everything is ready. Fourth milestone is how can you launch properly online, right? And fifth, last but not the least, how can you scale your business? Now it depends really on the stage you are at, right? कोई milestone 1 में होगा, कोई milestone 3 पे होगा, right? But kind of our guarantee, our promise to you is that आप कोई भी milestone पे हो, आप कोई भी चीज achieve करना चाहते हो, to become a 10x mentor, Mentogram and our pool of mentors will be there to support you. आपकी life easy बनाने के लिए, आपका cost कम करने के लिए. You do not need to spend so much on teachable, click funnels, this, that, ऊपर से ये mentorship, वो mentorship, right? We're trying to create a community where people genuinely can grow milestone by milestone, right? So there is a Google form link. You can scan this QR code also, right? And this is applicable for all the speakers, right? All of them have their boot camps. All of them have their this, right? If you are invited to the club, you get access to all the boot camps, all the mentorship, all the technology support, right? It sounds like a dream, but Mentogram has made it possible. So once again, thank you so much, Vivek ji, for a power pack session. Ab, I think it's time to call our next speaker, Mr. Sanjeev Bhatia. I think थोड़ी सी glimpses तो विवेक जी ने पहले ही दे दी थी, by calling him the content king. And so rightly, he is a content king. Within a span of just a very short span, he grew from zero to more than 20,000 followers on LinkedIn and even on Facebook, right? उनका कंटेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही मजेदार होता है. उनकी फॉलोइंग बहुत काफी लोग हैं that they are doing that, right? And he is Mr. अगर मैं संजीव भाटिया के बारे में थोड़ा बताऊं, he is the CEO of Nobility Ventures. It's a consulting and coaching firm. He's based in Mumbai, right? He has worked with various. He has worked as a CXO coach. वो एकदम top leaders और CXOs को coach करते हैं to support leaders to find their unique calling in life. We were able to convince Sanjeev Bhatia sir. I personally have interacted with him many times. कि sir आप आइए, आपका LinkedIn profile इतना strong है. You have 20,000 followers. आपका social media presence इतना तगड़ा है. तो यू प्लीज शेयर योर गाइडेंस, और आप अपने और हमारे ऑडियंस पे थोड़ा गाइडेंस थोड़ा गाइड कीजिए कि व्हाट इज योर सीक्रेट टिप्स, व्हाट इज योर सीक्रेट रेसिपीज, राइट? सो संजीव भाटिया सर, आर यू रेडी? Yes, thank you, Siddharth, for introduction. I'm really happy and pleased to be here. And thanks to Mr. Mahendra and Vivek, especially to Mr. Vivek. He's been he's not only set the tone, but he has also given a lot of inputs. Most probably I need to learn a bit more from him. Coming back to, yes, I think there is a resonance here. So do you want me to share my slides, or you will be sharing from your side? So this is, I think you can share from your side. Okay, if you've given me the rights, I'll let you go to that. So yeah, you should have the right. Yeah. Is it on the screen now for you? Absolutely. Yes. Perfect. So friends, I think you're most welcome to the LinkedIn. As people say, the content king, but I don't know. I've just started, so my journey is just started. I'm the beginner. A lot needs to be done. So LinkedIn is basically a very large, one of the largest, rather I say, the professional network with 810 million members in more than 200 countries and territories across the globe. It really creates an economic opportunity for every member of the global workforce. It's really a clear leader for connecting with B2B, business to business. If you're a business person, it also gives you the potential hires if you're hiring someone, and of course, if you're looking for a job, and of course, the business partners. So if you go and look and Google it, what is the vision of, what is the vision of LinkedIn? Look at it. What it says that create economic opportunity for every member of the global workforce. So they are creating it. It's your time to grab it. The mission is to, the link is to connect the world's professionals to make them productive and successful. You need to answer.
Are you productive now with this? Opportunities are there, plenty and galore. So what I'm doing is like, when I say yes, connect, the focus of the session is also how to have effective networking. So if you think out of 810 million users, it won't be difficult to connect with 500 people at least. And if you still find the problem with that, I'm going to cover a bit small piece of that. And of course, certain ethics on the LinkedIn so that you can still maintain your professionalism and enhance your network. So at the moment you connect 500 plus, you'll see a lot of profiles it says 500 plus connection means you are a super connector. But after you've exhausted your own list, you means your contact list, it can be really tough to do. What's next? How to do it? So believe me, when I say this, I'm really talking about how to grow and nurture your network. And I'm also going to cover about the quality over quantity. I mean, he's talked about 20,000 plus. Yes, of course, 25 is about touching now 23,000. I'm not very proud of that, but I'm really looking at the quality in that, which makes a sense to me. And I also need to see that what is my objective, as Vivek said, that what is the objective why you are there, and that is where the what will say your sweet spot you need to really find out. So LinkedIn is no longer growing and managing your network effectively. In fact, you are now at a point in the professional world where sorry you are now at the professional world where there's no option. I mean, if your personal network and LinkedIn is like synonym to each other to quite a large extent. And when it's a synonym, why are you losing that chance? It's so important when we talk about the quality and quantity. Of course, you can do both. You and technology at the LinkedIn has been very superb. The way they have managed, the way they are providing one after other features, I think you can do it very quickly and efficiently. So the question is how you can expand your professional network on LinkedIn and make sure that your new connects are relevant to your own objective. So let's talk about one by one. I mean, the simple tips, nothing that great about it, but yes, I did it and I'm going to share the same with you. So very first thing is to start with your own address book. You've got a lot of contacts, like in your WhatsApp group. I think Vivekji also said that your emails and everything. So start from there to see that guys to whom you've been knowing at least, you should connect. And believe me, don't send the mass invite to people. Don't just say connect, 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 connect. I think you're going to lose your sheen, your image, your shine. Don't do that. Write down the people you want to connect with, and that's important. And write a personal message. How to write? I'll just be talking about a bit after some time. Check out the people you may know actually, and that's important. Maybe they are not in your connection, but you know them. And possible connection, each time you log into LinkedIn, you just see that whom you know actually. But also don't forget to check on suggestions LinkedIn gives you after you connect someone. The moment you connect someone, LinkedIn will give you the similar type of profile of people to choose. Maybe you can see that somebody is of your interest too. Again, maybe you can send a request. But how to send a request, I'll be talking a bit more after some time. Also, when you make whom to connect, you also look at your old acquaintance. Like it was said in a previous session that where all you have worked, where all you know about some people, not only in the organization, maybe beyond in the business field, maybe some business owner, no harm, and you can give a context in which you are, means when you met and all this thing, and it can be from your school, maybe your location where you're staying, maybe you met somebody in a club, any group, industries, anything, and maybe just make a list. Now, not only that stops there.
It's also stop. I mean, beyond that is to once you connect that, maybe if the person is of more interest, say that what's a convenient time to chat? Maybe what's a convenient time to call you for maybe any common interest? People which they don't mind. If they're also keen to connect, they will may share their number. Call them up, have a chat. It's always said that the old saying is that you should always meet people in person. In today's world, you cannot, but you can at least give a call. So that's important when you're doing a business. At least a call, if not in person. You can always connect with the people, with the peer and prospect through LinkedIn group. There are certain group you can, if your interest is there, you type it, you get the LinkedIn group, and then maybe in the search you get into join the group, and then again you get to know more people. Other tip, of course, many of you are doing it. Connect with the people who viewed your profile, whatever reason they may have. Just connect with them. In fact, a lot many people when they connect with me, I definitely bounce back. Look my profile. I just go and just send a request. If you check my profile, is there something I would like to be facilitated or want to chat or something? Write a personal message. Person will be very happy and smiling. How is that? That you somebody you looked at it and you get a response from someone saying, "Hey, you looked at it and he say, hey, you looked my profile. Would you like to discuss something?" Nothing wrong. When people also, sometimes you write, some people they post. I have seen people they post it and they forget it. Please comment. People who connect, with their like comment and like at least your post, response to them. The new person is there, connect with the person. If somebody is liking your post, just respond to that. I have seen many people are don't answer even if somebody is writing a comment. Please please respond to person by even saying thank you very much for your gesture. Now the question is like whom to connect. Now how to approach, and that's very important. Please, if you have any question, please type it down. I'll be happy to really connect with you. So how part of it? Personalize your LinkedIn connections. It's important to understand how to connect with someone in LinkedIn in a way that puts them at ease. And it's just don't put simply connect. Again, I'm repeating it. Instead, look at the individual profile page. See where the commonality is there. Say good to meet you last week at this place, or let's keep in touch. Anything you want, just write at least 2 words. Good to connect. If you're interested in connecting with someone you don't know, such as a person who works for the similar role, maybe you're in IT, another guy is also in IT, how to connect with another person who is in IT? Maybe you can just write a simple sentence. I've seen your post. Notice we have a common function of common field. Really appreciate your perspectives and would love to connect. Write a sentence, personalize it. Follow up, of course, I am talking about follow up. Again, I'm saying if the face to face is possible, fine. If not, connect with or a call or an email. Break down your goals, and that's important when you really want to do how part of it. It's very important. First 100 to 500 is a milestone, by the way, because you're super connector identified, and divide that numbers over the week or the month. It's very important for me, or I'm not sure I'm giving you gyan or knowledge, but yes, at least 5 new connection on a daily basis. Something who matters to you in your life, in your profession, in your business. So it's very important to do that, and try setting your goal. Not again, I'm saying punching the button, connect, write, personalize, because once you say connect, it'll give you a space to write a few lines and really make it a realistic and time bound. You will see how fast you go. Maintain a proper etiquette. Refrain from spamming people that you don't know. Don't say mass. Please, I have seen these people doing it. Please don't, because quality matters over quantity.
And also don't expect the people who have you have made a request to connect, they will respond. Some may not, because they may have their personal philosophy. So you can't cross the boundary. Don't write that, hey, I've sent it, connection, you have not accepted. Don't do that, please. Invite engagement for posting often, and that is what is lies the trick. Posting is so important. You should write, post, write something, whatever of your interest, whatever you observe. Um, of course, refrain from politics, refrain from rationalism, refrain from something which is controversial, because I don't think that serves the purpose. Maybe that those kind of platforms on Facebook or Instagram, but not the LinkedIn. LinkedIn is that you have to make your personal branding. So somebody had asked the earlier session, what is the second degree? Second degree is that once you connect someone, anybody connected to that person is called the second degree connection. A third degree is the person connected to that second person. So definitely you will get the pop-ups of the people once you connect with someone, and you'll get a pop-up. There's some more similar profile and kind of thing. So you will definitely look into connection by connection. Now, when you write something, of course, we'll be doing on content writing a boot camp. But nevertheless, before that, even if you're writing something, put a picture. Visual, the picture really attracts, and this is what I learned while started posting. If it's a video, believe me, it's 20 times more attention grabber than your content. People will see the video, they will read it. They'll see the picture, they'll read it. So please, if you're posting, look for something, Google, draw a picture, even hand drawing will work. People will appreciate it. And of course, whenever somebody is posting, including, I'll say, Vivek and Mahendra, if they're posting, or anyone else speaker here, please just simply write great thoughts. Thanks for sharing. Loved it. Everything. And believe me, the whosoever is posting, they will love you, and they will respond to whatever you're writing if they are a good etiquette, a person who is looking at the personal branding, person who wants to put a really influence and impact the world. They will do it. If you are a job seeker, do it. People will say, yes, this guy writes something. This guy writes better. And believe me, I was not a good content writer till I started writing. Key words, yes, once you're a job seeker, put some keywords of your profession. Just don't write of your history. Write some keywords, because the job, hire guys who are hiring their people, they definitely look for certain keywords in the LinkedIn. Do that. If you are writing something, as Vivek said, the follow 3 hashtag, maybe you can follow 4 for me, but doesn't matter. But keep on posting, because hashtags actually links people to the people who are looking for that kind of content, or something like CEO insights. For me, it goes for CEO insights. It goes for the coaching. It's good for the human resources, and these are my hashtags, which really which connects the people. Uh, it's a common practice to share the blog post your company or with the others have written that you feel resonates with the audience. So believe me, you update you on LinkedIn and sharing your URL as and when, wherever there's an opportunity, just do that. Because when those insights are your own, when you're writing on something, your insights, you're also telling the world what do you think about all these postings. And definitely there are different categories, as Vivek has said, that post, which is just the 250 words. Article can be maybe 1,000 words, but the post of 250 words, which takes 1 minute read, an article can take maybe 4 minutes to 6 minutes read. Definitely 1 minute read is, in today's world, people, they will read more. Another question is how to communicate. Please thank everyone, not only just acceptance that whatever the people have requested you to connect, just connect. Say thank you for reaching out. Say some words, coin some words for yourself, or just write anything and thanking them. Uh, don't be afraid of asking questions. When you're communicating, ask questions. How you can help? What can you do for this? What can be our common interest?
respond to every community of your post. And this again, I'm repeating, please do that, because if you're writing anything, people writing, believe me, there are very few people are going to write out of 810 million people. So you need to respond to them with a nice smile in your mind. Put comments, then only like on others' posts if it impacts you. So please put your comments if you something likes it. You say, it was a good, but so what? Let the person who's posted put at least a thumbs up if you are in a hurry. Do that, please. Whom to connect? We talk. Sorry, I think I've gone by mistake. The first slide looks like it's PPT. Yeah. So let's talk about, I think, a time short. So my story, what I've done is 4 years back. So I was looking at for the session that what I did 4 years back. I was just sharing the videos shared by others on LinkedIn, just sharing without any comment. After later, I realized 3 years back, one liner with sharing other video. I have to just write, great learning, something. So my links have been looking at the what my comments was only one line. I didn't have the guts to write the second line. 2 years back, I wrote my first three lines as a post. That year, I started also with a one New Year wish picture, 2020, 1st January 2020. That year also I wrote because I was the airport, Indore airport. I saw General General Vipin Rawat, along with his wife descending from an Air Force aircraft, and he was about to board on Air Force choppers. I saw him coming down, and of course, I was impressed. My family was there. Everybody was so much appreciative about his gesture, meeting not only the Air Force people, but ground staff and tapping on the back. And I said, such a humility of a person of such a stature. That was my first post, and it was really been appreciated. I was very happy after posting. Just a year back, I attended a boot camp on how to write content, and I posted in lockdown when I was at home, and my topic was lockdown has brought work-life balance. Ask your spouse. And my first post, so-called officially, has received 46,954 views. I was just checking; it has gone already 46,997. Anyhow, so this was when I was making the slides. And rest is history, because I do post at a frequency of 1 week or 10 days of anything which is not only related to my business, but also related to what I observe in the surrounding and relate to my thought process. I'm so sorry. I think it's coming back. Maybe people, this is in. Like I'm just sharing the screenshot, and when I wrote 54 and screenshot the circle is about 46,968, and this morning when I saw it was 96,997. It's 1 year back only. So you will get it, whatever you post. If the post is good, connects with the people, it touches the heartstring, they will resonate with you very well. So what's my passion? My passion is very simple: to ensure people get from where they are to where they want to be by helping them choose and set and achieve the powerful goal. I really believe to bottom of my heart that each one has been gifted with a unique talent, unique power. The creator, whomsoever your God is, doesn't matter. The creator has made all our fingerprints unique, and the same uniqueness is put in our mind, our body, our heart. And my job as a coach is to find out what is so unique about it. And once I bring it on the table for you, I really coach you how to translate that uniqueness on your day-to-day work, how you translate on to meeting your goals. And believe me, then whatever you are, whatever force you have, inside force to address your today's problem or future's problem, you're going to be the most powerful person in the world, maybe surpassing any of the speakers speaking here. Who knows? You may be
venturing, you will be leading the mentogram all sessions. So what I have for you today is a gift, a complimentary coaching session on career, business, and life for 1 hour. You can bring it on anything on. It'll be offered to you. And of course, the next month, I'm starting a boot camp on content writing, how to make it effective with my learnings, some tips, how to start, how to capture the heading, and whatever opportunity comes, how to write. Even on mentogram posters, I have written twice, and believe me, I loved it because I not only got the response, a lot of you joined today because of that here. So you can connect with me because the session is about connections, and this is my LinkedIn, mobile, WhatsApp, email. I just love the session. Thank you very much. Over to Siddharth. Thank you so much, Sanjeev ji, for this very insightful session. I think both Vivek ji and Sanjeev ji, पूरा A to Z of LinkedIn kind of framework दे दिया है हमारे attendees को. So we kind of received one question: is this session all about LinkedIn? No, it's not. What we believe is कि भाई LinkedIn में बहुत potential है. बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि LinkedIn को सही तरीके से यूज कैसे करना है. Mentogram uses it for lead generation. All our speakers, Vivek ji, Sanjeev ji, they are LinkedIn kings, to be honest. So we thought of, bringing 2 sessions for LinkedIn, right? But thank you both, Vivek ji, Sanjeev ji. I think it was lovely, having you today. And I hope all our participants, would have got a lot of insights about LinkedIn and how you can become a 10x mentor using LinkedIn as a platform, becoming an influencer there, right? So if in one word you want to describe, both the session by, Vivek ji and Sanjeev ji, please put it in the chat, just in one word, how did you find it, your feedback, and that will really help understanding, right? So sorry, Siddharth, one line. I'm just yes. responding to the question. Is it about LinkedIn? No, please, it is not for LinkedIn. It is for you to how to build your personal branding. You can do the same on Yes. Facebook. I did not talk about the Facebook, by the way, because I'm very new. But still, as Siddharth said, being still new, I think followership has suddenly gone up because I write same passion. What I love it, whatever touches my heart, I just share it. I think you can do it better than me. Thank you very much. All the best, the unique guys in the world. Thank you, I Sanjay love sir, you so all. much. Right. One just thing I would like to add, right? Like I personally have interacted with Sanjeev sir a lot of times. One thing that has stayed for me, throughout is this word that he coined, that is feed forward, right? So not feedback, but feed forward. So I think that is very, very important, when we are becoming 10x at something, like 10x mentor. So I think that feed forward attitude is very important. So Sanjay sir, I think that is something I wanted to share with everyone, that they take the feedback as it is the feed forward, like not back, but forward, right? So I think that was something that it's really inspiring even the mentogram team, right? So as Sanjeev ji said, that there is a content mastery bootcamp that is going to launch in next month, right? And if you want to get it, the step remains the same. You sign up for a 10x mentor club. You not only get access to the content mastery bootcamp, but the bootcamps for all our mentors that are going to be there, and many more whom we are going to onboard this in the upcoming few weeks. You also get access to the technology system, the platform, the funnels, everything that you might have just learned but never implemented. This is now the chance to kind of implement the learnings, right? Because action matters more, right? ज्ञान तो हम सबके पास है, but the difference is how many of us are implementing, right? Each of one of the speakers that we have today, they have implemented the gyan, they have experimented, right? We have done so many experimentations, so many jugad, and then they are sharing their knowledge, right? And so if you have not applied, please do apply for the 10x mentor club. If the mentogram team and our pool of mentors, if we find a good fit,